morning. Morning. Good morning. Good morning, Ji. Good morning to everybody. So welcome to the Mokshapatta orientation program. And as you all know, Mokshapatta is one of those methodologies जो मेरे दिल के करीब है. But who am I? I am Shweta Agarwal for all those who are joining us for the first time. And I have started a brand known as Transcending Beliefs in 2020, जब COVID hit किया. उस टाइम पर ये रिक्वायरमेंट थी that there was somebody somewhere to talk to and to listen to people, and this is how Transcending Beliefs was created. And then the vision started expanding into helping people rediscover themselves. The problem is not कि हम कुछ बाहर ढूंढने जाते हैं. The problem is अपने आप को ही नहीं जानते, तो दुनिया में क्या चाहिए ये कैसे हम ढूंढ पाएंगे. So with this vision, we started off working on with a series of workshops, programs, trainings, meditation programs that would help you connect with your own self and fulfill your potential. And this is the dream that Transcending Beliefs has, to inspire everybody across the world to become self-healers, self-independent caregivers for their own lives and their families. So with this vision, I welcome each one of you today to the Mokshapatta orientation program. And I hope all of you will receive from it whatever you are meant to. So before we start, let me please request everybody to quickly put on the chat कि which language are you interested in? English, Hindi या दोनों mix चलेगा. Chat में डाल दो, मैं सबको mute पे डालूंगी ताकि question answers हम बीच-बीच में लेंगे. We'll take up questions in the middle, and so that nobody gets disturbed. So put it on your chat, please. Hindi or English is fine. So we'll use a mix of language, and जहां आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, when I ask you for questions, please पूछिएगा. I will explain it to you. Any space you need more clarification, हम आगे जब question answers करेंगे तो मैं आप लोगों को देती जाऊंगी. So पहले बात करते हैं मोक्षपाठ है क्या? What is मोक्षपाठ? मोक्षपाठ एक ancient Vedic lost sciences में गिनी जाती है, जो कि कुछ इस तरह से लगती है. As you can see, ये board है और इस board पे 72 boxes होते हैं. There are 72 boxes on this board. Each box has its own meaning. हर box का अपना meaning है. Genesis, illusion, egotism, radiation, reality, austerity, ignorance, irreligiosity, bliss. ये वो 72 मायने हैं, दायरे हैं, states of being हैं, जिसमें आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी बंधी है. If you will see one thing, there is not much left beyond these 72 states of being as pertaining to our life. Moksha, as you all know, is a lost science, and जब ये science initially create करी गई, so there are documents which show that there were 200 boxes on this board. फिर कुछ समय बाद 200 से 140 हुए, 142 से 72 रह गए हैं. Well, आप इसको जिंदगी का पर्सपेक्टिव मानिए, डाइल्यूशन मानिए, टाइम के साथ चेंजेस मानिए, ट्रांसफॉर्मेशन मानिए. Something or the other has made us move beyond those 200 to end up with this 72 boxes. But the fact is, ये 72 boxes अपने आप में complete हैं आपकी लाइफ को define करने के लिए. You really don't need more than this. So what we can, instead of looking for what was lost due to the Mughal era or the British period, Nalanda की universities जब destroy हुई, शायद तब lose हुआ. We don't know what really happened, how it got lost, but we know that ठीक है, जो हमारा गुम गया उसको छोड़ के let's focus on what we can live with. Why? Because these 72 boxes are more than enough for you to live your life with. ये बहुत हैं आपके लिए. अगर आप इन्हीं की एनर्जीज को मास्टर कर ले तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप ला सकते हैं. मोक्षपथ का मीनिंग क्या है? व्हाट डज मोक्षपथ मीन? मोक्षपथ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. ये दो शब्दों से निकलता है, मोक्ष पटम. वेल, इसके नाम भी बहुत सारे हैं. मोक्षपटम है, लीला है, ज्ञान चौसर है, ज्ञान चौपड़ है, बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट,
board of wisdom. बट अल्टीमेटली इस बोर्ड का मीनिंग है वो रास्ता, वो पाथ जो आपको मोक्ष के रास्ते यानी कि निर्वाणा के रास्ते लेकर जाए. द पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, द पाथ टुवर्ड्स निर्वाणा, और द पाथ दैट विल हेल्प यू disconnect and become free from the cycle of life and death. But as a spiritualist, एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो ये सीखी है that nothing is defined and nothing is 100% sure. So who knows what truly moksha is? Is there another life beyond moksha? Is there another cycle beyond moksha? So instead of waiting for moksha जो हमें जिंदगी के एंड पे मिलेगी, I believe it is our duty, it is our, I would say it should be our choice to look for a path that gives us moksha in our lifetime. इस जिंदगी को जीते हुए सब रोल्स को फुलफिल करते हुए जो हमें मोक्ष दे वो एक्चुअल में मोक्ष पथ है. एंड लाइफ में मोक्ष का मिलना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. लाइफ में हमें जीते जीते तब मोक्ष मिलता है जब हम अपने आप को मास्टर कर लेते हैं. व्हेन वी मास्टर आवर ओन इमोशंस, आवर ओन थॉट्स, आवर ओन बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड चॉइसेस. व्हेन वी गेट अलाइंड टू दैट एनर्जी व्हिच इज विद इन अस. सो मोक्ष पाठ सिर्फ आपको जिंदगी के एंड पर मोक्ष नहीं देगी, जिंदगी में जीते जीते अपनी करंट सिचुएशन से फ्रीडम दे सकती है और एबिलिटी दे सकती है सो दैट यू कैन लिव विद चॉइस, कॉन्शियस चॉइस एंड कॉन्शियस एफर्ट थ्रू आउट योर लाइफ्स, मैनेजिंग योर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मेट. मैनेजिंग अ लाइफ जहां पर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, चॉइस होगी, करेज होगा टू मेक द राइट चॉइसेस एज पर योर सोल जर्नी, not just the human journey. And for me, that is why Mokshapatta is important, because Mokshapatta जो है वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका है. Of course, it is a divination tool, it is an occult tool. ये टैरो की तरह है, एस्ट्रोलॉजी की तरह है, जहां से आपको आंसर्स मिलते हैं, जो आपको गाइडेंस दे सकता है, पाथ से कनेक्ट कर सकता है. It can become a very beautiful tool to help you master what you need to do to move out of a situation. What are your karmic baggages? Soul journey कहाँ पर है? क्या lessons हमें learn करने हैं? Beyond that, Mokshapatta is the philosophy of life. आपकी पूरी जिंदगी इन 72 boxes में combined and consolidated है. Nothing that we do in life is beyond the realm of the current Mokshapatta. For example, आज आप सब यहाँ पर बैठे हैं, listening to what I am saying, learning more about Mokshapatta. What you are, the energy that you are within is the energy of सुविद्या, यानी कि पॉजिटिव अच्छी विद्या जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाएगी. When you bring it into application, you move from the space of nullity या फिर stagnation into activity. जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कहीं पर कोई हमें गलत सजेशन दे रहा है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, and we choose not to listen to it, we once again move towards the positive. लेकिन जब हम उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को, उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हम फंस जाते हैं बुरी संगत में, बैड कंपनी, एंड वी फॉल डाउन. सो दिस इज हाउ द board of Mokshapatta will combine all aspects of your life to create a path for you जो आपके लिए है. अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, सो हिस्ट्री अगेन, यू नो, इंडियन साइंसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हमारे यहाँ शास्त्र श्रुतियों का ज्ञान थे. श्रुतियों का ज्ञान मीन्स समथिंग दैट वाज वर्बली गिवन बाय अ गुरु टू हिज स्टूडेंट्स. Therefore, a lot of it was lost. There is no written, concrete scripts to give us proof कि कब हुआ. But the earliest mention of Mokshapatam being created was in the 2nd century or the 13th century. 2nd century में भी mentioned है, 13th century में भी mentions है, जैनिज्म में भी mention है मोक्षपटम का, और बहुत सारी जगहों पर अलग अलग इंडियन कल्चर्स के अंदर मोक्षपट mentioned है. But the oldest mention that I have recently found is the 2nd century, where Maharishi Gyandev had created this concept of Mokshapatam to teach his students the concept of karma and dharma in a more concrete form. So Gyandev जो थे वो एक गुरुकुल के टीचर थे और उन्होंने मोक्षपटम क्रिएट किया जिससे कि
एक बच्चे को, उनके शिष्यों को ये सिखाया जा सके कि धर्म और कर्म क्या है। बट यू नो द फंडामेंटल पार्ट ऑफ धर्म एंड कर्म, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म डेफिनेशन नहीं है, डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिकॉज सोसाइटी के लिए एक चीज सही है, आपके परिवार के लिए, फॉर योर फैमिली समथिंग एल्स माइट बी राइट, एंड फॉर योर ओन पर्सनल सेल्फ third thing might be the correct answer. So there is no definition of right and wrong. Every definition is correct. So then how do you define what is right karma and what is right dharma? धर्म क्या है और कर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? एज अ मदर जो आपके लिए सही है, एज अ फादर जो आपके लिए सही है, एज अ चाइल्ड वो आपके लिए गलत है. As a partner, something else might be true. In every aspect of your role, आपका कर्म और आपका धर्म दोनों अलग है. और उस कर्म और धर्म की डेफिनेशन को मोक्षपथ बहुत ब्यूटिफुली क्रिएट करता है. Because it gives you a very clear guidance that if this is the role, this is the right dharma, this is the right karma. ये रोल है तो इसमें आप ऐसे बिहेव करेंगे. अगर इस रोल में ये नहीं वर्क कर रहा है तो ये एनर्जी आपको पीछे पुल कर रही है, सो वर्क विद इट. सो इन अ वे मोक्षपथ आपके अंदर का आईना भी है. इट इज अ मिरर दैट शोज यू व्हाट इज विद इन यू. मोक्षपथ का स्कोप बहुत वाइड है. यू कैन यूज इट इन मल्टीट्यूड ऑफ वेज. You can use it as innovatively as possible and as you want to. For me, Mokshapath is not just a method of getting answers and guidance. It is a method that connects me to myself, my energies. It tells me कहाँ से आगे बढ़ो, कहाँ रुक जाओ, कहाँ पे एक diversion ले लो, अभी टाइम सही नहीं, या फिर कहाँ पे I am not ready to move ahead in life and I need to work on myself. So Mokshapath is one methodology which is like एक अनार 100 बीमार की जगह मैं कहूंगी एक board and 100 solution. And from the day Mokshapath came into my life has grown. I have grown as a spiritual being. My own perception of understanding life and people has changed. जहाँ लोगों के लिए बहुत सारी judgments होती थी, वो judgments नहीं रहती है. Situations, problems नहीं रहते, they become lessons in life. इससे ये सीखो, आगे बढ़ो. So, मैं ये जानती हूँ कि एक टाइम था 2018-19 में जब मैंने मोक्षपथ पहली बार सीखा, मुझे नहीं पता था मोक्षपथम क्या होता है. मुझे नहीं पता था ये मेरी लाइफ में क्या लाएगा. एक दिन एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, जैसे आप लोगों के पास आया होगा ऑन यूट्यूब, फॉर फेसबुक और व्हाट्सएप, सेइंग यू नो एंशिएंट वैदिक स्नेक्स एंड लैडर. एंड जस्ट लाइक यू, आई आल्सो सेंट अ मैसेज बैक, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये है क्या चीज. So this lady who taught me, who was my initial guru for Mokshapath, she said, you know, it is ancient Vedic snakes and ladder board. Each board has its meaning. This can help you get guidance in life. Now, I am a person जो एक healer है, एक और एक mentor है, लेकिन उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है from divination methodologies like tarot or astrology or numerology, any which ways. मुझे ये सब चीजें बहुत कम आती थी, उसको आती ही नहीं थी. I was like, I am not a reader. How will I learn? What do I do with it? She said, you know, you join the workshop and I promise you one thing, you will never regret it. उस वक्त वो पीस मेरे लिए बहुत ज्यादा थी. I was going through a very, very bad financial crisis and I could not really afford that fee. But I believe in the divine. So I left a question, if this is the right thing for me, please create an opportunity for me to learn. And within a span of 4-5 days, कैसे भी आ गए, वो वर्कशॉप के लिए रजिस्टर भी हो गया एंड माय जर्नी स्टार्टेड. बट व्हेन आई लर्न टू मोक्षपाठ, उन्होंने मुझे 4-5 क्लास में मोक्षपाठ सिखाया एंड मुझे हमेशा एक ये थी, एक यू नो एक फीलिंग थी अंदर मन में दैट यू नो श्वेता, मोक्षपाठ इज बिगर, way bigger than what you assume it to be. It is way bigger than what you think it to be. So go into it. फिर एक टाइम आया, उन्होंने बोला लोगों के क्वेश्चन आंसर करो, प्रैक्टिस करो, एंड आई कुड नॉट आंसर बिकॉज बोर्ड से कनेक्शन ही नहीं था. एंड देयरइन बिगैन माय जर्नी इनटू एक्सप्लोरिंग मोक्षपाठ. तो मैं रोज रात को बैठती थी और पूछती थी, अच्छा बोर्ड, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, कैन यू शो इट टू मी. एंड आई वुड सिट इन फॉर मेडिटेशन. और वो एक एक बॉक्स करके वो अपने आप उसके मायने और उसके दायरे खुलते चले गए. एंड एज इट ओपनड अप आई रियलाइज्ड it's not just a word, it is my life, it is everybody's life.
एंड दो मोक्ष पाठ लाइफ के लिए कोई गाइड बुक नहीं आती, कोई मैनुअल नहीं आता। 1+1 करो, 1 में ये वाला होल घुसाओ, 2 में ये वाला पाथ चेक करो, 3 पे आपको ऐसे बिहेव करना है। बट विद मोक्ष पाठ दैट गाइड, दैट गाइडेंस, दैट मैनुअल ऑफ लाइफ केम इनटू मी विद मी, एंड टिल डेट आई हैव ओनली ग्रोन विद इट। हर वर्कशॉप, हर ओरिएंटेशन मुझे कुछ नया सिखाता है अपने लिए। सो मोक्ष पाठ इज नॉट जस्ट my methodology, it is my guru, and it is that beacon that guides me and lights my life to move forward. And soon, hopefully, fingers crossed, I am going to launch my first book, The Snakes and Ladders of Life, which is going to be on understanding Moksha as a form of life, as a form of being, so that it guides you further into life, not just by answering your questions, but वो जिंदगी के मायने आपके लिए खोल दे, आपके consciousness को expansion दे. Any questions till now? Please raise your hands or put it in the chat and I will answer them, and then we will move ahead. Benefits के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में. How does it help you? We'll talk about all of that. But if there is anybody who would like to ask, please raise your hand. Yes, Sushma ji, please unmute. I have sent you a request. Please unmute yourself. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I have a question. Will we come to know about our past life or like some bondages, some like blockages of life from Mokshapatta? So I would personally suggest कि आप पास्ट लाइफ रीडिंग मोक्षपाठ से ना करें. ब्लॉकेजेस, कार्मिक बैगेजेस, जो भी आपके लाइक ब्लॉक्स है लाइफ में, जो करंट लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, वो आप पता कर सकते हैं. Okay. And ma'am, ancestral problems, matlab paternal hai, maternal, that also we will come to know from this. Find out. That is going to be dependent on how you create your questions, Sushma ji. So question की wording पे वो dependent है, वो ढूंढा जा सकता है. Yeah, I got it. Thank you, ma'am. You're welcome. So Rupa is asking a question. There are so many courses these days. Sorry, nahi, Rupa ji, Rajiv ji ka question hai. Ek minute. Rupa is asking a question. What kind of questions can be asked from Mokshapatam? So Rupa, Mokshapatam से आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो. ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जो आप अवॉइड करेंगे. You can ask questions regarding timeline. When will I get married? How much time will it take for me to buy my own house? When will I do it? So any question which is when, why, where, how, what, all questions can be answered. यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है. आप ब्लॉक्स पता करना चाहोगे, बैगेजेस पता करना चाहोगे, सोल्यूशन पता करना चाहोगे, no matter what you want to find out, you can find it out. Then Rajiv Sardana says, there are so many courses these days. After doing this course, does one require to do any course? No, Rajiv ji. आप मेरे, I guess you are somebody who has come to our platform for the first time. I personally do not believe in giving things in bits and pieces. So all my divination programs, all my remedy programs are one-shot programs as of now. Healing programs के अंदर ऊपर नीचे होता है because there are self-healer levels and trainer levels and practitioner levels, but there are only 2 levels उसमें भी. यहाँ पे only 1 level. Everything I know about Mokshapath will be given to you in one shot, one workshop. Secondly, we have an alumni group. Alumni group में even after you graduate, all my alumni of every Mokshapath batch was there, and जितना कुछ मैं नया सीखती हूँ मैं उन्हें उसी ग्रुप से देती जाती हूँ. So this is limitless learning because I personally believe life is not supposed to be limited to a certain aspect. Learning should not be limited. जैसे मैंने question कर करके सीखा है, I want to have a group of people who will learn, and we will learn together, we will grow together. So there's no benchmark and there is no boundary where we say full stop. We'll keep on learning, but we'll learn together. Then this is Kajal. This is a single level program. What is the fee and duration? Fee and duration थोड़ी देर बाद discuss करेंगे Kajal. Not now. Please थोड़ा सा wait करेंगे. Rashmi, yes, you can ask questions for your family, for yourself, for your clients, anybody. शिप्रा बाद में personal questions लेंगे. गौरव जी डिसबैलेंस में है. गौरव जी आपका भी question हम थोड़ी देर बाद लेंगे. भाविका. May I know with the help of Mokshapath how many janams I have? You can cross check it. मैंने कभी भी ये नहीं check किया कितने जन्म थे. That is a better, I would say, कितने जन्म आपने अभी तक जिए हैं वो आकाशिक records के perspective में ज्यादा आएगा, मोक्षपाठ के perspective में नहीं. मोक्षपाठ 6 महीने क्या यार, साल भर की रीडिंग कर सकता है. लाइफ टाइम पूरी सोल जर्नी इस लाइफ टाइम में आपकी रीड कर देगा.
इसमें सॉल्यूशंस मिलते हैं. हाँ जी राधा जी, सॉल्यूशंस मिलते हैं, बट प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड. Moksha is about your soul journey, right? So solutions are internal to you. It is not going to tell you जाके अपने husband को ठीक करो या अपनी mother को ठीक करो या आपके in-laws को ठीक करो. वो कहेगा अपने आप को ठीक करो. So whatever you do has to be limited to you and yourself. Please be very open and okay to it. There is no harm in learning this technique, Monica. And in fact, anybody, whether you're pregnant, you're in your periods, whatever you are doing, you can learn it without any kind of repercussion. Suneet Chabra, please unmute yourself and ask your question. I sent you a request to unmute. Yes, very good morning. Good morning. Yes, ma'am. As you said, I just when saw this WhatsApp message, I was really shocked to see what is this snake and ladder. So I said, let me try. Let us see if something new is coming up in my way. So I just have a question. As you said, yet there is a no manual of life. But Yes. as you said, according to dharma and karma, like being a lady, being a female, so my role will, according to my role, I am mother, I am sister, I am wife. So my role, my dharma, my karma will be different from male, right? As you said, I think. I want to No, I understand did that. not say that. I said everybody has a different role to play as a different person. So for example, अगर आप अपने parents से deal कर रहे हैं, your role as a daughter is different from the role of a wife. The role of a Right. wife is different from the role of a mother. So जब आप अपने parents के साथ हैं, तो जो जैसे आप behave करेंगे, जो आपके duties है, वो आपका उस वक्त का कर्म है, धर्म है. When you come into the space of a wife, your karma and dharma will be fulfill that role. जब आप कुछ भी नहीं है, तो आप अपने लिए क्या करते हैं, वो आपका रोल डिफाइन करता है. So that is how your roles will change, and your roles will define your karma and dharma. Okay. Okay. I will gradually maybe learn more. Thank you. Thank you, Sunil ji. काजल, unmute please. मैंने आपको भी request भेजा है. काजल वार्ष्णे, please unmute. I have already asked my question. Thanks, Akit. Thank you so much. So yes, you can get answers to any kind of questions. देखिए personal questions अभी हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा wait करेंगे please. We shall wait, give it a little break. I'll tell you about all the पहले देखो आप मोक्षपाठ के बारे में बताने दीजिए. Let me tell you the benefits, how it helps in your life, for whom it is there. Then from there, we'll move towards the workshop details. And end May 40-45 minutes, I'll try and answer one question for as many people as possible. Then you can ask me the questions. So personal questions अभी मत पूछिए, अभी पूछिए मोक्षपाठ के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं. Yes, you can ask the questions for others, Sonia ji. Subhadra, can I get real answers to my question? Yes, yeah, real life है, real answers है. Mokshapatta is not some animated cartoon. You will get what you want here in this lifetime, applicable to your journey in this moment of time. But जो journey के लिए guidance मिलेगा, solution मिलेगा, that will be effective cross timelines for you. So healing आज करोगे, solutions आज के लिए मिलेंगे, result आज में, कल में और गुजरे हुए कल में हर जगह मिलेगा. Uma ji, I will just tell you the EE in a while. मीरा जी, एक क्वेश्चन आपका बाद में लूं, पर्सनल है अगर. अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुको, I will unmute you. Vandana ji, can you please unmute yourself? Vandana Ramnathan, I've sent you a request. Hello, ma'am. Like I would see, suppose you want to know about the future, we go to an astrologer and he gives you some remedies like performing some puja in a temple or go for 5 Fridays to a Durga temple, then your problem will be solved. So in Mokshapatta, will we get similar remedies? No, no. मोक्षपट क्या कहता है, आप एक परमात्मा से निकली हुई आत्मा हो. You are a tiny little part of the same divine that you pray to. So the only thing that you need to create differences in your life is work on that little self within you. So that, see, the difference is not that. देखो एक चीज मुझे बताओ, चलो इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करते हैं. एक आम के पेड़ पे आम ही उगेगा ना, एक एप्पल के ट्री से एप्पल ही गिर सकता है. करेक्ट, राइट और रॉन्ग, वंदना जी? Yes, yes. Now that apple can become rotten due to excessive rainfall. या कीड़ा लग गया, है ना? Yes. So one thing I want to tell you is the tree is not wrong. So the same way, the core of the seed is not damaged. हमारी आत्मा में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोच में है, हमारे पर्सपेक्टिव में है, हमारे कर्म हमें ठीक करता है.
So Moksha part will tell you remedies which will work on your thoughts, emotions, karma, and your perspective of looking at it. If it says आपको जाकर के कहीं दान करना है, तो वो ये नहीं कहेगा 10,000 रुपए दान करके आओ, वो कहेगा टाइम दान करो, donate your time. Go and spend time in an orphanage, go and spend time in a old age home. If it says you have to do charity, it is not just charity in terms of material. It is charity in terms of, be charitable to yourself. Don't judge yourself. Don't judge other people. So it is working on your energy system through your thoughts, emotions, vibrations, perspectives of life, beliefs, and your own choices of karma. This is more internal rather than external. Though, of course, जो लोग astrologers हैं, numerologists हैं, or other fields में है इस type के, you can give remedies from the fields as well. So like I know Vedic switch words. Many times I suggest Vedic switch words for chanting. पर वो आपका personal choice है कि आप दो methodologies को cross refer करें. But compulsory नहीं है. मोक्षपाठ का मानना क्या है? It is your soul's journey. So whatever is stopping you from evolving and becoming enlightened, जो आपको रोकता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से, वो आपके अंदर है. उसको heal करो, उस पे work करो. Ma'am, is it only dealing with this lifetime, or Mokshapat can say something your about your soul? previous See, it is lifetime? dealing with the soul. The soul is the same no matter how many lifetimes you live. Right. So whatever is stopping you in this lifetime is going to stop you in the next lifetime also if you don't deal with it. So we are talking about soul level healing. So this is going to make us a completely noble human being. Noble हम सब हैं. Trust me again, we have उसको झाड़ू पोछा करके वो nobility को निकालना है. अंदर है. घुसा हुआ है. Maybe extra good. Somewhere. Extra good. Yes. No, extra good, Vinny. It will help you realize your full potential. Trust me, one thing, everybody, not just Vandana ji, we are not creating a new you. We are just rediscovering the best you. Yes, Mehru ji, you will get the board. So board, जैसा मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड. ऐसा basically क्योंकि ये boards पेपर पे बनाए गए हैं दोबारा से, तो इस टाइप का बोर्ड मैं सॉफ्ट कॉपी में शेयर करूंगी सबके साथ. आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो. वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग आवर ओन डिजाइन बोर्ड्स ऑन बेसिस ऑल्सो. वो जैसे ही आएंगे आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे सब जगह. सो यू हैव द चॉइस ऑफ पिकिंग इट अप. दिस सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बोर्ड कम्स विद द वर्कशॉप. फॉर दिस यू डोंट हैव, दिस इज इंक्लूडेड इन योर फी. एंड जो अगर आप उसके ऊपर कुछ बनवाना चाहेंगे, दैट विल बी एक्स्ट्रा. Okay, so let's stop here with the questions and we'll move ahead. हाँ मीरा जी, पहले आप अपना पूछ लीजिए, नहीं तो आप एक मिनट अनम्यूट करो. मैंने रिक्वेस्ट भेजा आपको अनम्यूट करने का. अनम्यूट करिए प्लीज. Yes. You know my question. I won't repeat it about my son and daughter-in-law. That can be answered. Yes, it can be answered. It can be answered. That only I wanted to know. It will be answered. बाद में करेंगे. जब करूंगी तब आप पूछ लेना. ठीक है. Okay. Monica Madan, quickly, and Sushma ji, quickly give me your questions. Monica Madan, quickly, please. Yeah, hi Shweta. I would like to know how is this Mokshapatta different from other forms, like people these days advocate a lot of meditation and there is then mindfulness and all those things. So, I mean, where and how can we sort of... Meditation क्या करता है, Monica ji? Meditation gives you a clarity of what is within you. It gives you a space of emptiness जिसमें आप realize कर सकते हैं, आप identify कर सकते हैं क्या work कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. Right? Mokshapatta. Okay, then let's do mindfulness. You said mindfulness. Mindfulness जो होता है वो हमें अपनी conscious choice में लाने की कोशिश करता है, wherein every word that we speak, every action that we take, every thought that we vibrate at has a basic or a purpose. It is a conscious effort. Now, what does Mokshapatta do? It brings everything which is theoretical into a practical one form. For example, एक सेकेंड, मेरे को बोर्ड दोबारा शेयर कर दीजिए. Perhaps मैं आपको उससे समझाऊंगा. Suppose करो कोई, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है मेरे लिए
क्लैरिटी, ठीक है। अब क्लैरिटी किस चीज की? क्लैरिटी तक मैं पहुंच गई, मुझे बोला भाई इस क्वेश्चन पे यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर पाथ, इफ यू आर क्लियर अबाउट योर पाथ यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द क्लैरिटी आई नीड? इज इट अ क्लैरिटी ऑफ माय पर्पस कि मुझे चाहिए क्या है? इज इट द क्लैरिटी दैट मेरा एक्शन सही है या गलत है? इज इट द क्लैरिटी what I'm trying to do is not practical because I am not ready for it? So ये जितने दायरे होते हैं ये मोक्षपाठ बहुत easily मेरे को सामने लाकर दे देता है। So what I am trying to say is that a lot of things which are theoretical become more clear and straightforward through this board, and that is the biggest difference. And because see, this is talking about a soul's journey, a soul's life. So इसके एक एक बॉक्स के अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं एज अ इन अ पर्सनल लाइफ, इन रिलेशनशिप्स, फॉर योर ओन पर्सनल सेल्फ, फॉर फिजिकल हेल्थ, फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, फॉर फाइनेंसेस, फॉर बिजनेस। आप उसको जब एक एक एवेन्यू, एक क्वेश्चन के पैरामीटर से कनेक्ट करोगे तो एक ऐसा डिस्टिंक्शन निकल कर आएगा विच इज मोर एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट। आई विल नॉट से मोक्षपाठ इज 100% accurate because 100% accurate तो यार भगवान भी नहीं थे कभी। So I would rather say readings taken out from Mokshapatta are 90% accurate and they are probabilities based on today's energy. So for example, अगर मैंने पूछा है मुझे एक 4 bedroom का हाउस खरीदना है या अपार्टमेंट खरीदना है in X city, in X colony, and I get an answer today, that answer will stay and has proven to be right as long as my need did not change. अगर मैं 6 महीने बाद बोलूं नहीं मुझे 6 bedroom हाउस चाहिए, फलानी जगह चाहिए, which is an upgrade or a downgrade, the reading will change. So considering today's time, like energy, मेरी रीडिंग आज तक I would say कभी भी गलत नहीं गई है, but फिर भी I would like to say it is 90% right and it is a probability. Why? Because human consciousness has the possibility and the energy to change anything and everything in the world. One choice can help you change your future. I hope, Monica ji, that answers your question. I can't see you anymore. Can you, I hope that helps you understand. Baki, I think the question answer. Yes, Ishweta, that has helped a lot. The only thing is what you mean by theoretical aspects. You said theoretical aspects when we take it. Tell me, if I tell you one thing, what is mindfulness? How will you answer it? See, mindfulness is, I think, again, a sort of like bringing certain practices which disconnects you from your disturbing. So tell me one thing, if your son is not getting well along with you, how can you bring mindfulness over there? I agree. That's why I just wanted to. Now, so मतलब जैसे आपको path नहीं मिला ना, what to do? That path is can be defined by Mokshapatta. Okay, got it. ठीक है, that is why I wanted to ask you so that ये चीज आपको clear हो जाए, तो मेरा question का answer आप तक पहुंच जाएगा. Thank you. Thank you. सुषमा जी, आपका question last ले रही हूँ and then we are moving forward. फिर थोड़ी देर बाद I'll take more questions, please. Please unmute yourself quickly. Ma'am, as I'm very interested in this, but I have one doubt. Like this gives answers of not like long-term questions, like life's questions, or they give the answers. I'm sorry, I did not understand your question. Yeah, wait, ma'am, just tell me how it is different from tarot reading. Like there also we get the answers of our questions. So tarot so what I'll do is for tarot, difference between tarot and moksha, but I'm not a tarot practitioner. मुझे आता है, but मैं practice नहीं करती. I will ask some of my students to help you with this in a little while. They will talk about tarot, the difference between tarot and Mokshapatta, because they are using both the methodologies. Okay. मेरे adminize हैं यहाँ पे. They will answer this question in a more clearer perspective. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Bhushan ji. मैम, ये जो मोक्षपथ का जो पार्ट है, जैसे कि आपने बोला कि आप जैसे सोचते हैं वो चेंज हो जाता है, तो हालांकि वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली? वर्क कैसे करता है? आपकी सोच में आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाएं, उसको एक्सपैंड करें. जैसे जैसे एक्सपैंड करते जाओगे अपने आप सोच बदलने लगेगी.
And इसके लिए भी I would request Dr. Rupa and Meeta ji who are here, I think I saw both of you, to answer this, because you are living with Mokshapatta, changing your life through Mokshapatta at every level. So once they will share with you. But देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हमें ये समझ में आता है कि कर्म वाकई में क्या है, धर्म वाकई में क्या है, या गुड कंपनी का मीनिंग क्या है, तो ऑटोमेटिकली सोच बदलने लगती है. क्यों? Somewhere or the other, a new thought comes into your mind and a new tree grows up. It's a gradual process. It is like आपने एक डब्बा खोला है और उसमें से नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है, एक नया जिग्सॉ पजल बन रहा है. I will not say कि by the end of the workshop everything will change for you. It will not. It's a very gradual process. But by the end of the workshop, you will start seeing a change in you. A very remarkable change, because ये मैंने अपने सब स्टूडेंट्स में देखा है, एक या दो में नहीं. People have started becoming, like calmer. They have started thinking, instead of pointing fingers, they start thinking, okay, why am I attracting this and how do I deal with it? So instead of life becoming external, life is becoming internal. बहुत से आपकी ऐसी सोच के पैरामीटर्स होते हैं जो हमने लोगों से सुन के लिए हैं, उसको हम क्वेश्चन करने लगते हैं. And we start creating our own perspectives about life, of what we want. I hope Bhushan ji that answers your question. मैम बट इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है. ये तो सब इंटरनल सोच के मतलब अंदर होता है. जैसे कि हम इंटरनल अगर सोचे तो वो सोच अगर हमने इंटरनली अपने माइंड पे ले ली और पूरी तरह हम इसे वर्क करें तो वैसे भी हो सकता है. बट इसमें मोक्षपट मतलब क्या रोल निभाता है? अपने आप को फुल्ली, हाँ मतलब फुल्ली मोक्षपट अपने आप को कॉन्शियसनेस करता है या रेडी करता है थॉट्स प्रोसेस के लिए? माय डियर मिस्टर भूषण, एक चीज मुझे बताइए, हम सबको पता है नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. दिन में हम 100 बार कहते हैं लेट्स नॉट थिंक नेगेटिव, फिर भी सोचते तो नेगेटिव ही है. यस यस. तो आप अपने ब्रेन को कितना भी रेडी कर लें, आपका ब्रेन आपकी नहीं सुनने वाला. यस सर. आपके ब्रेन को कुछ भी सुनाने के लिए एक बाहर का एक धक्का चाहिए, एक उसको एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन चाहिए जो ब्रेन को बोले ना बेटा तो इधर घुसका, और फिर एक डंडा चाहिए पीछे से, जो डंडा उसको ठोक ठोक के बोले नो एवरी टाइम तो गलत जाएगा, तुझे आगे से लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है. अब जाके हमारी थॉट चेंज होती है. अगर थॉट को चेंज करना इतना आसान होता तो मेरे जैसे लोगों की क्या जरूरत होती. और मोक्षपट जो है आपको जिंदगी का एक नया दायरा दिखाता है, सिखाता है. उसको यूज कैसे करोगे यार, वो तो आप यूज करने के हजारों तरीके हैं. जो मुझे आते हैं उतने मैं आपको जरूर दूंगी. उसके बियॉन्ड it is your choice how you use it. But you can ask this question a little ahead to all my alumni who are here. They will answer this question instead of. चलिए अब आगे बढ़ते हैं and we will come back to question answers in a little while, because मुझे आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देनी है, वर्कशॉप के बारे में बताना और आपके वन पर्सनल क्वेश्चंस भी आंसर करने की जितने हो सकेंगे जरूर कोशिश करूंगी. सो मोक्षपाठ का बेनिफिट क्या होता है? आई एम श्योर इससे इतनी कॉन्वर्जेशन से कुछ बेनिफिट्स तो आप लोगों को वैसे ही क्लियर हो गए हैं, बट मोर ऑफन देन नॉट जस्ट लेट मी रिकैप इट फॉर यू. मोक्षपाठ जो है हमें प्रोफेशनली पर्सनली 2 लेवल्स पे बताऊंगी. सो प्रोफेशनली इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, टू ग्रो योर रीडिंग और योर प्रैक्टिसेस. मोक्षपाठ सिर्फ एक इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी की तरह भी यूज किया जा सकता है. अगर आपको कुछ और नहीं आता, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो भी आप इसे सीख सकते हैं. और अगर आप बहुत दिग्गज हैं तो भी आप इसे सीख सकते हैं. मोक्षपाठ में कोई एज बार, कोई जेंडर बार, कोई सिचुएशन बार नहीं होता. द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज द विल एंड द विलिंगनेस टू लर्न अबाउट मोक्षपाठ. देन जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, रेमेडीज देते हैं, उनके लिए मोक्षपाठ एक एडेड ऑन सर्विस है, एक एडेड ऑन एस्पेक्ट है. आज के दिन मेरे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, नाम नहीं लूंगी, दे आर चार्जिंग अप टू 11,000 रुपीज फॉर 1 सोल जर्नी रीडिंग और फॉर 1 हॉरोस्कोप रीडिंग. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कम लेते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा लेते हैं. सो इट इज अ वेरी मार्केटेबल साइंस इफ यू वांट टू मार्केट इट. पर्सनली मैं अब 1-on-1 रीडिंग्स बहुत कम लेती हूँ, बिकॉज दैट इज फॉर माई स्टूडेंट्स टू डू एंड आई ओनली टीच. I prefer to teach. So unless and until कोई reference मेरे students के through आता है, मेरे alumni के through आता है, I normally do not take their sessions, so that there is no indirect or direct competition between any of us.
This is their space to grow in, and I love seeing my students grow. Though they are, most of them are elder to me, लेकिन मेरे लिए इस space में जितना वो grow करे उतनी मैं ज़्यादा खुश हूँ. So it is that way for me. Second, thirdly, as a professional, ये अगर आप एक life coach हैं, आप एक counselor हैं, Mokshapatta will help you understand more, life in more nitty-gritties. Scientifically, as a life coach, as a counselor, आपको बहुत कुछ पता है. उसको उस लैंग्वेज में डालना कि सामने वाला समझे, वो मोक्षपाठ आपको एक बेसिक भाषा में दे सकता है. क्यों? मोक्षपाठ इज लाइफ दैट यू एंड आई आर लिविंग टुगेदर. द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू कनेक्ट. कभी कभी लोगों को ये बोलना कि भाई आप गलत है नहीं चलता, लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या कोई सोच है आपकी जो आपको रोकती है और आप उसको ऐसे डिफाइन करें, तो उन्हें आंसर मिल जाता है. मेरे जो एस्ट्रोलॉजी के जो एस्ट्रोलॉजर्स मेरे एलुमनाई में है, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जहां पर हमारी रीडिंग आती है इन टैरो और इन एस्ट्रोलॉजी, वहां पे हम मोक्षपाठ को कंबाइन करते हैं टू गिव अ होलिस्टिक रीडिंग. सो यू कैन यूज 2 मेथोडोलॉजीज ऑफ रीडिंग ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज मोक्षपाठ. तो मैं मोक्षपाठ के साथ अगर मुझे पास्ट लाइफ रीडिंग करना होता है तो आकाशिक यूज करती हूँ. आई हैव नेवर नीडेड टू यूज एनी अदर मेथड, पर आप कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल. थर्डली, इसके प्रोफेशनली आप अगर मोक्षपाठ का ये प्रोग्राम करते हैं तो इसके बाद में यू कैन ट्रेन पीपल, फर्दर ट्रेनर्स, आप प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन कर सकते हैं. दिस इज अ प्रैक्टिशनर एंड अ ट्रेनर प्रोग्राम एंड इट इज 100% सर्टिफाइड. ऑब्वियसली आप रीडिंग्स कर सकते हो. रीडिंग्स के 3-4 दायरे होते हैं. एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर रीडिंग होता है. दूसरा, आप एस्ट्रोलॉजिकल तो नहीं बोलूंगी, मोक्षपाठ से एनुअल हॉरोस्कोप बना सकते हैं विदाउट नीडिंग द डेट ऑफ बर्थ और द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एनीबडी. एंड इट इज क्वाइट एक्यूरेट एज फार एज आई हैव डन माई रीडिंग्स और माई स्टूडेंट्स हैव डन द रीडिंग. अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें रीडिंग्स मैच नहीं करी है, पास्ट या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की. एंड फ्यूचर की तो खैर हमें लास्ट में पता चलती है, तो पास्ट में ही आ जाता है अल्टीमेटली. देन थर्ड, आप सोल जर्नीज क्रिएट कर सकते हैं. रेमेडीज के अंदर जब हमें ये लगता है ना कहीं हम अपने क्लाइंट को जो भी रेमेडी दे रहे हैं वर्क नहीं कर रही है, तो मोक्षपाठ से सोल्यूशन निकाल कर रेमेडी दो, वो वर्क करती है, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ. सी, स्टोन्स पहनना, पूजा करना, इन सबका काम है आपकी एनर्जीज को क्लीन करना. लेकिन अगर आपकी एनर्जी आप एक तरफ से क्लीन कर रहे हो और दूसरी तरफ से गंदगी अब्सॉर्ब कर रहे हो, नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहे हो, देन उस पूजा का फायदा क्या, उस स्टोन को पहनने का फायदा क्या? एक तरफ से झाड़ू लगाओ, एक तरफ से कचरा लाओ. सो थ्रू मोक्षपाठ व्हेन यू गिव रेमेडीज, इट इज वर्किंग ऑन योर इंटरनल सेल्फ साइड बाय साइड. So whenever you are doing puja, whenever you are doing whatever activities you are supposed to do, you're wearing stones or colors or whatever, it is going to bring more effect to your life. Because कचरा जमा नहीं हो रहा है, जो साफ कर रहे हो वहां जहां सफाई हो रही है वहां साफ ही सब रहेगा. Now, at a personal level, Mokshapatta helps you identify your own minuses. And वो ये नहीं बोलता कि गलत हो, क्योंकि गलत सही तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में. It tells you how to understand the gray areas of life. We have always been taught this is right and this is wrong. अगर सिर्फ right and wrong में जीते, so then why is it that one person killing a man is given a medal while the other person is given a death sentence? So in certain times and spaces, what is right might not be right in another circumstance. इसे कहते हैं जिंदगी के ग्रे एरियाज. सो जिंदगी ग्रे एरियाज में जी जाती है, राइट एंड रॉन्ग में नहीं जी जाती. एक छोटा सा बड़ा फनी सा एग्जांपल आपको बताती हूँ. एक बच्चा था, उसको स्कूल में टीचर ने पूछा, इफ आई गिव यू 2 mangoes and 2 mangoes, how many mangoes do you have? And he said 5. टीचर ने फिर उसको बड़े प्यार से पूछा, 2 आम दे रही हूँ बेटा, 2 है, 2 और दे रही हूँ, कितने हुए? He said 5. She got very angry at the end and she shouted at him कि क्या बोल रहे हो, 2 + 2 5 होता है क्या? He said, no ma'am, but I already have 1 in my bag. So I have 1 in my bag, you are giving me 2 and you are giving me 2 more, that makes it 5. ना तो टीचर गलत थी ना बच्चा गलत था, दोनों की पर्सपेक्टिव और रियलिटीज गलत चेंज थी, बच्चा अलग अलग थी. सो ना तो वो सही है ना वो सही है, ना वो गलत है ना वो गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. एंड लाइफ इज लिव्ड फ्रॉम दिस ग्रे एरिया.
अगर आप इस ग्रे एरिया को समझ लें तो लाइफ अपने आप सुलझ जाएगी. Life will start becoming simpler for you because you will start understanding that every time you point a finger, you are pointing a finger, you are pointing for at yourself, which is telling you work on your own self. Stop blaming. So life में बहुत सारे perspectives आपके लिए खुलने लगेंगे. उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना कि वाकई में हमने हमेशा सारी जिंदगी सुना ना, अच्छे कर्म करो, कर्म कर फल की इच्छा मत कर. ये क्यों है? जो हम सुन रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, और उसको जिंदगी में अप्लाई कैसे करें. हाउ टू मेक ऑल दिस एप्लीकेबल. The biggest question in life is, if I am in a state of sorrow, how do I move out? If I am getting incomplete information, how do I deal with it? If I am stuck in a negative journey, how do I move beyond it? This understanding comes clearly to you. Theory एक concept में बदल जाती है, एक context में बदल जाती है through Mokshapatta, and this is what I have seen in my life. See, the reason I can talk 2 hours, 4 hours, 10 hours about Mokshapatta is because Mokshapatta ने मेरी जिंदगी में मुझे create किया है. It has given me the bandwidth to understand myself, my life, and move ahead in life. श्वेता अगर आज कहीं पर है, उसका 50% क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को जाता है. क्यों? इस बोर्ड ने मुझे बार बार पकड़ के खींचा है, सही जा, ये कर, ये कर, ये कर. एंड नॉट थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, सिंपली टू मेड जस्ट क्वेश्चनिंग द बोर्ड. अच्छा, आज की एनर्जी कहाँ है, आज किस पे फोकस करें, आज क्या गड़बड़ होगा, ये तो बताओ, कहाँ किस चीज को नहीं करना है आज, एंड यू वुड गेट योर आंसर. छोटे छोटे तरह से, बड़ी बड़ी तरह से Mokshapatta has changed my life, and that is why I know for a fact every person here can change their life through Mokshapatta. Mokshapatta हर बार जितनी बैचेस होते हैं उतनी बार एक नए फॉर्म में क्रिएट होता है, उतने बार एक नए तरह से डिलीवर होता है. So though there is a set format of teaching it, there are no set parameters of Mokshapatta. Mokshapatta will be coming to you and will be delivered to you in the way your batch needs it. मतलब एक साथ 2 बैच चलते हैं, मेरे 3 बैच चलते हैं Mokshapatta के. I only take 2 or 3 batches in every 3 to 4 months because it takes a lot of energy. And हर बैच में एक डिफरेंट तरह से कंटेंट क्रिएट होता है. कोई बैच सिर्फ उन लोगों का होता है जो हीलर्स बनना चाहते हैं, जो रीडर्स बनना चाहते हैं. एक ग्रुप होता है जो अपने लिए ग्रो करना चाहता है. तो जो भी कंबाइंड एनर्जी उस ग्रुप की होती है, उस हिसाब से Mokshapatta की डिलीवरी होती है. Now let's move ahead. Yes, Rachna ji, you can unmute yourself. Rachna Hello. Sareen. हाँ जी. Sorry, Rachna Jain. Yes. हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी क्लास में. वैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया ना, उसी से ही मेरे माइंड में आया कि किस तरह से हम इससे पता लगा लेंगे कि हम क्या प्रश्न आया है और हमें उसका क्या आंसर करना है. जी. और मुझे ये पूछना था कि हमारा ना एक डील चल रही है पुराने घर की. अभी वो पर्सनल क्वेश्चंस रचना जी थोड़ी देर में लेंगे. अच्छा, ठीक है, ठीक है. ओके. कम टू इट एंड देन आई विल टेक इट. प्लीज डोंट. ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. चलिए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द वर्कशॉप. So I will tell you about the workshop, and then I will ask my students to talk about the program. या पहले मैं alumni पहले आप अपनी sharing दे दीजिए. Let me see how to do. Admin, any suggestions, please? चलो, let me just tell you about the workshop, and then हम आगे बढ़ते हैं. Finish that part. So just to give a quick recap कि हमने जो भी डिस्कस किया, मेरी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करती हूँ. मोक्षपथ क्या है? इट इज द बोर्ड और द पाथ टुवर्ड्स निर्वाणा. इसके बहुत सारे नाम हैं. 4 सबसे पॉपुलर हैं: लीला, ज्ञान चौपड़, गेम ऑफ नॉलेज, या फिर बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, परमपद, और भी बहुत नामों से ये जाना जाता है. मोक्षपथ में 72 बॉक्सेस हैं, और ये 72 बॉक्सेस डिफाइन करते हैं वाइसेस, वर्च्यूज, कर्म, धर्म, अधर्म, सुकर्म, बहुत सारी चीजों को. इन अ वे देखा जाए तो ये 72 बॉक्सेस आपके कॉन्शियसनेसेस, आपके स्टेट्स ऑफ बीइंग को डिफाइन करते हैं. ये महर्षि ज्ञानदेव ने क्रिएट किया था
to bring the knowledge and wisdom of the Vedas into a simpler form for his students. ये बोर्ड हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताता है, हमारी सोल जर्नी इस लाइफ टाइम में कहाँ पहुंची है, क्या लेसन्स लर्न किए हैं और क्या हमें और करने हैं, उनके बारे में बताता है. स्नेक्स रिप्रेजेंट द वाइसेस, यानी कि वो गलत सोच, गलत आदतें, गलत बिलीव्स, एंड जो लैडर्स होते हैं वो वर्च्यूज होते हैं, वो सुकर्म होते हैं, धर्म होते हैं जो हमें ऊपर लेकर जाते हैं. Arvinder ji, questions थोड़ी देर में please. You can just put down your hand for now. मोक्षपाठ के benefits क्या होते हैं? It helps you understand your present state of life, likely future, considering the current energies. It helps you answer any kind of question. इसमें question का कोई demarcation नहीं है. Solutions देता है, सही path बताता है और incarnation की philosophy को बहुत simple तरीके से समझा देता है. कोर्स के लिए, कोर्स में मैं there are 15 classes as of now, plus 1 class for certification and assessment. So lesson 1 में हम बात करते हैं introduction of मोक्षपाठ, मोक्षपाठ क्या है, soul journey क्या है. Second class में cleansing of the board, energizing of the board, storage कैसे रखना है. Third class में हम करेंगे चक्रा system and row 1. एक एक क्लास पूरी 2 घंटे की होती है, which is 2 to 2.5 hours की for each session, and एक एक क्लास पूरी 1 रो की अंडरस्टैंडिंग में दी जाएगी. So 10th क्लास तक तो हम रोज ही डिस्कस करेंगे. There are 8 rows in मोक्षपाठ. 11th सेशन के अंदर we will talk about the different questions that you can answer. कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप क्या आंसर कर सकते हैं, किसे एक क्वेश्चन से क्लाइंट का अगर एक कंसर्न है तो कंप्लीट रीडिंग निकालना है, ये सब हम करेंगे. ऑफ कोर्स सब प्रैक्टिकली होगा ये सारा पोर्शन. सोल जर्नी मैप आउट कैसे करेंगे, मोक्षपाठ से पूरा हॉरोस्कोप कैसे क्रिएट करेंगे 1 साल का. देन जो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोक्षपाठ सीखने के बाद में आप उसे मार्केट कैसे करोगे, हाउ विल यू मार्केट इट, हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन प्रोग्राम, हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ, हाउ डू यू डिजिटलाइज योर and monetize your Mokshapath practice. That becomes a very important part. So एक पूरी क्लास है मार्केटिंग के लिए. इस वर्कशॉप के अंदर 15 क्लासेस होती हैं Zoom पर, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है. Apart from that, 75 recorded videos are given as notes. There is no PDF manual. There are voice recorded notes or videos and audios in the के फॉर्म में 75 नोट्स मिलेंगे, जिससे आप अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेंगे. प्लस सेम चीजों को क्लास में एक डिफरेंट मोर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करके क्लैरिटी दी जाएगी. एंड देयर इज इनफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टू हेल्प यू वर्क विद योर मोक्षपाठ. सीखेंगे क्या? ओवरऑल ऑब्वियसली बोर्ड तो सीखोगे, उसके साथ साथ क्या सीखोगे? You will be able to understand each box from the perspective of a soul's journey. एक आत्मा के लिए क्या जरूरी है, एक वैदिक लाइफस्टाइल के हिसाब से वो बॉक्स हमें क्या सिखाता है, और आज की लाइफस्टाइल में उस एनर्जी को कैसे छोड़े, कैसे यूज करें, उसका बेनिफिट कैसे उठाएं. 72 बॉक्सेस को प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस या कॉन्शियसनेस की तरह से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द 72 वेज ऑफ लिविंग आवर लाइफ. दीज आर दोस जिग्सॉ पजल्स जो कहीं हिल गए हैं हमारी जिंदगी में, और हमें उन्हें इकट्ठे लाकर अपनी पिक्चर दोबारा बनानी है. चक्रा सिस्टम को समझेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोल एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, कॉन्शियसनेस एंड ऑफ कोर्स मोक्षपाठ रीडिंग. जो कॉन्सेप्ट हम हमेशा सुनते आए हैं, धर्म, अधर्म, कर्म, वाइसेस, वर्च्यूज, उनको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में समझेंगे कि कैसे वो हमारी लाइफ लीड करते हैं, और किस रोल में क्या धर्म हो सकता है और किस रोल में क्या अधर्म हो सकता है, और उसको कैसे एक बैलेंस में लेकर आए ताकि हम अपनी जिंदगी को एक बेटर वे में लीड कर सकें. फिर हम ये भी समझेंगे कि सोल जर्नी जो होती है उस होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोल जर्नी, सोल का पर्पस क्या है, अपनी रियलिटी को अगर हमें आउट क्रिएट करना है, एक नई रियलिटी क्रिएट करनी है, हाउ डू क्रिएट दैट न्यू रियलिटी, हाउ डू वी ट्रांसेंड आवर रियलिटी, आवर सेल्फ एंड आवर बिलीव्स, how do we understand our karmic work. And one very important thing I would say here is कि life में anger is not meant to be controlled, negativity is not meant to be controlled, it is meant to be mastered.
How do you master it is the key to evolution, enlightenment, and moksha. Then easy, effective ways of cleaning your board, energizing your board, and programming your board. How to ensure कि आपके client की energy, उनके thoughts आपको affect ना करें reading के time पे. आप अपने client की energy से disconnected रहें ताकि उनका pain और trauma आपको आपकी life में affect ना करे. उसके लिए I teach you centering, grounding, different techniques. Then अगर आपको एक रीडिंग देनी है जिसमें आपके पैरामीटर्स एंड पर्सपेक्टिव्स नहीं इंक्लूड होते, हाउ विल यू डू दैट? बिकॉज कई बार जब कोई क्लाइंट आता है और ऐसी बातें बोलता है जो कि हमें अच्छी नहीं लगती या हमारे स्टोरी से मिलती हैं, तो हमारी जजमेंट, हमारा बायस या फिर हमारा अपना पेन उसमें ऐड हो जाता है एंड वो रीडिंग को थोड़ा ट्वीक कर देता है, थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है. तो हाउ डू यू गिव एन अनडिस्टॉर्टेड रीडिंग? How do you start channeling pure knowledge? How do you connect to your board and become more intuitive? And how do you give intuitive guidance better? Situations, जो क्वेश्चन कई बार आपके पास जब आते हैं तो वो दिखते तो बहुत सीधे हैं और होते बहुत टेढ़े हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस की रूट कैसे पहुंचे? पैटर्न्स, कार्मिक पैटर्न्स कैसे समझना है, उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है राइट पाथ आगे बढ़ने के लिए. You will also cover all of that. मैपिंग अ सोल्स जर्नी इन दिस लाइफ टाइम. इस लाइफ टाइम में अगर आप 50 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 20 साल के हो, जहां पर भी आप हैं, what has your soul learned? What is the journey that you have lived till now? And from today's energy, आज की एनर्जी को देखते हुए आपको आगे क्या lessons learn करने हैं? कार्मिक lessons which you need to learn, पॉजिटिव नेगेटिव फेजेस जो आपकी लाइफ में आएंगे आपकी करंट एनर्जी को देखते हुए, एंड इन एनर्जीज को हमें कैसे चेंज करना है, इन फेजेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को चेंज करके. फिर क्रिएटिंग एन एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप विदाउट टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मोक्षपट हॉरोस्कोप क्रिएट करना सीखेंगे. एथिक्स क्या होते हैं रीडिंग के, चीट शीट्स कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि 72 बॉक्सेस एकदम से आपको याद नहीं होंगे. सो हाउ डू यू क्रिएट योर ओन चीट शीट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाए, बिकॉज अगर सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे सही आंसर नहीं मिलेगा. If you want the right answer, you need to learn how to ask the right question and frame it in the right way. So framing of questions becomes very important. Creating your own pre-recorded programs, offline programs, online programs, कैसे करना है, उसको monetize कैसे करना है, ये सब हम discuss करेंगे और हम सीखेंगे. How to combine Mokshapatta with other existing skills and modalities. This is a very important part because especially for those people जो already इस field में practice करते हैं. Then real time reading कैसे करना है, hands on practice. And by the way, अगर आप मेरे साथ ये कोर्स कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके भाग जाओगे. You are going to become a reader or a trainer, which means you have the strength or the opportunity to change lives. तो वो चेंज पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो, इसके लिए आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट देना पड़ेगा टू गेट योर सर्टिफिकेशन. एंड अगर बाई चांस, वैसे बहुत कम होता है, 1% स्कोप होता है कि कोई असेसमेंट क्लियर ना करे, अगर असेसमेंट क्लियर नहीं होता, यू विल प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड रीसेट फॉर द असेसमेंट. दोबारा असेसमेंट दोगे विद द नेक्स्ट बैच. तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार फेल हो गए तो सारी जिंदगी में फेल है. ये एक असेसमेंट फेल किया, यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ विनर. सो यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, री-प्रैक्टिस, डीपन योर नॉलेज एंड रीसिट फॉर द असेसमेंट. वैसे ट्रस्ट मी, ऐसा मतलब 75 में से 2 स्टूडेंट कभी निकलेंगे या एक निकलेगा तो निकलेगा, बहुत कम होता है. इट इज नॉट वेरी ऑफन दैट दिस हैपेंस. सो वंस अगेन, इस कोर्स में 15 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 15 लाइव क्लासेस हैं जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. माय मिस्टेक. 75 recorded videos to give you as notes, and a practitioner and trainer e-certificate is also given. Transcending Beliefs is already registered under the Government of India Trademark Act to train and certify trainers and practitioners and self-healers. So ये जो certificate है ये valid है anywhere. It is not just a random certificate. We are registered with the government. Post program support. सर, हम जब प्रोग्राम करते हैं किसी के यहाँ किसी के साथ, तो क्या होता है, प्रोग्राम खत्म, ग्रुप्स आर डिसॉल्व्ड एंड यू आर लेफ्ट.
But here there is post-program support. So number one, alumni group. Alumni group resolves your problems and helps you, gives you support as per need. और वहां पे सिर्फ मैं नहीं होती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे और मेरे students होते हैं from day one till now who are there to support you and help you. Second, live जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद में एक जूम सेशन होता है जैसा मैं आज ले रही हूँ, कुछ उसी टाइप का, जहां पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ प्रैक्टिशनर एंड यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस फॉर योर स्टूडेंट्स. ट्रांसेंडिंग बिलीव्स के प्लेटफॉर्म पे यू आर ऑब्वियसली लाइक यू आर your video, your testimonial, everything goes there and you are shown as a certified practitioner. 3 महीने का एक प्रोग्राम हम YouTube पे करते हैं for each batch and this is not mandatory, compulsory तो नहीं होता, बहुत सारे batches avoid करते हैं, but जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए where they can showcase their skill in Mokshapatta. So it's a pre-recorded program and हम हर week या every 15 days इसको post करते हैं, इसको stream करते हैं. अगर आप अपना कोई भी मोक्षपाठ रिलेटेड काम करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, कुछ अपना इवेंट करते हैं, तो दैट कैन बी posted on our Mokshapatta Maestros group, Soul Connect group, and Transcending Beliefs alumni YouTube channel. Not on the main channel, on the alumni channel. And जब भी आप कोई भी काम करेंगे, तो hands-on support as and when needed is given. In all practitioner level programs, practitioner and trainer level programs, because वहां पर मेन काम शुरू होता है वर्कशॉप बंद होने के बाद में, वर्कशॉप के बाद, not during the workshop. So therein all the support is there. It's a very hands-on, very detailed course. And guys, please, एक चीज मैं आपको सबको बता दूं, I am a very strict teacher. मैं, चाहे आप मुझसे 10 साल बड़े हो, चाहे 10 साल छोटे हो, चाहे 50 साल बड़े हो, when you are in my space, I will do my utmost, give you my 1000%, but I expect your 1000% in return. So I am a strict teacher. मेरे साथ वही लोग आए जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं. मैं आप लोगों को पहले बता दूं, because बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है हम आएंगे, एक कोर्स रजिस्टर करेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा. यहाँ नहीं मिले. Especially for Mokshapatta, you will not get it till you're ready for it. Now coming to the batch certification, I have told you. Okay. Now there are two, actually हमने पहले 2 बैच सोचे थे, but आज मॉर्निंग में एक बैच और ऐड किया है. So we have 2 batches starting from the 10th and 11th of April. एक बैच मॉर्निंग में है, which is going to be Mondays and Mondays, Tuesdays and Fridays. And evening batch है Tuesday, Thursdays and Saturdays. And especially for Delhi NCR people, we are announcing our first offline weekend batch in Delhi. This will be on 3 weekends, 6 days, morning 10 a.m. to evening 6 p.m. More details have been shared with you on the Zoom chat. So offline workshop के अंदर 6 full days की classes होंगी. Half day का एक session होगा for your assessment and certification. And offline will include all your meals for the day, physical board, printed out board, goatee, dice, कोई भी printed material, notebooks, जो भी आप लोगों को चाहिए, वो सब कुछ इसमें included होगा, including a proper printed, laminated and printed certificate to celebrate your graduation. And of course, alumni group सबके लिए common है. Now for those people, who want to be a participant of the program, offline workshop originally 41,000 का था. Early bird price 31,000 है, but for those people who will register today and only for this batch, it is going to be 23,000 only, payable in 3 installments. सिर्फ आज के लिए अगले 2 घंटे में जो रजिस्टर कर रहे हैं या आज इवनिंग तक, admin please clarify the timeline for me. It is going to be 23,000 only. This is the weekend offline batch. और जो लोग online कर रहे हैं, actual fees 31,000, early bird price is 21,000. But again, for those who are registering today, it is only 16,700. That is why this price is not there, because मैंने जब सुबह हमने ये देखा, we thought we would give the first opportunity to get the best deal for those who are present here.
You can book your seats and you can make the payment through InstaMojo, bank transfer, Google Pay, Paytm, whatever it is that you want. This is only there for this batch. Next batch se full fee 21,000 and 31,000 ka hoga. That much I'm telling you all. Whom to connect with? Okay, so Monica ji, you can connect with my team. Numbers aa gaye hain niche. You can, Pallavi, can you please share just your number also? एक बार, एक minute, और कोई question तो है इसमें नहीं है. Okay, now I'll take first Veenu ji's question and Sushma ji's question, and then move ahead with my alumni sharing of their experience. Yes, Veenu ji. I just wanted to ask you कि अगर हम लोग इससे अगर एक रीडिंग करते हैं किसी के लिए, तो वो मतलब उसमें अगर आपको सपोज करिए कि कोई नेगेटिव उसके लिए आया कि हाँ वो आप आदमी की बीमार होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो क्या उसके लिए कोई सोल्यूशन उसमें आता है या वो सोल्यूशन मिलेगा आपको? सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन एक और पूछना पड़ेगा, बट सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं बोर्ड से. अच्छा, और one thing more, I wanted to ask you कि we will get the recordings now because I will be traveling for 3 days on 12th to 16th. You will get all जो online workshops की total recordings are available. Okay, done. And can I ask a personal question or it will be later? After 10-15 minutes. I'll take. Just give me 10 minutes. Sushma ji, unmute, please. Ma'am, I got my answer. That batches I was supposed to ask. That time I raised, but next slide was about that only. Great. But I have one personal question that whenever you will say. Yeah. Yes, Kajal ji. Kajal Varshne. Unmute, please. Yeah, I also have a personal question actually, so later I can ask. Just personal questions के लिए 10 minutes और alumni कहाँ हो? Please raise your hands so that I can see you all. I can't see all of you there. I can see, yes, Dr. Rupa, I can see you, and I can see, 1 minute, let me add you on the spotlight. Yes, Dr. Rupa, please go ahead. Hi, ma'am, how are you? I'm good. Thank you so much for always being a very big source of strength and support for me. Thank you so much, Dr. Rupa. It's my privilege of being here. It's so great to be here with you always. Hi, everybody. I'm Dr. Rupa. I am a dental surgeon. Before Mokshapatta, I used to practice Reiki, past life regression, and many more such modalities. But there came Mokshapatta, and the most valuable thing Mokshapatta has given me is my guru. I am very indebted to my guru, Shweta ma'am, and Mokshapatta as a student, it's a very great thing to learn. I'm using it in every day of my life. My family has been benefited with that, be it my husband, my parents, my siblings, children, everybody name them, and we have solutions, we have guidances, everything for our lives to come. Past, present, future, we are using for everyday life. So during the course, it was nobody teaches like Shweta ma'am. There are comparisons also where a few of my colleagues have done, and she is the best teacher. You can blindfolded, you can just join her course, and the hand holding the transcending belief does nothing like it. You will be shown the path, you will be guided every step of your life, how, be it marketing, be it how to carry on after the marketing, everything is taught. And the alumni group, everybody is there to help each and everybody holds everybody's hand, and wherever we are stuck, each other helps each other. So it's such a good thing that we are associated with transcending beliefs, and I insist everybody does. And professionally, I should say Mokshapatta has taken me places, like I'm practicing it for people abroad also. And that way, if people are skeptical about how we can earn from Mokshapatta after reading,
I'm an example. I have clients from abroad, like America or even South Africa, a remote place, who are repeatedly coming. The same clients, if they're not happy, they wouldn't have come back. Like they have a different source of mindset in Western countries. They also are believing in Mokshapatta, and moreover, I learned tarot reading from a different mentor, and I have done a Mokshapatta reading for her also. She requested me to do it, and she paid me. And I have done a reading for a tarot reader. She's a very big name. I don't want to name her here. Still, uh, and that is an example, and it boosts my own confidence that how good Mokshapatta is and what good thing I have done being a student or being an expert or being a reader, everyday practitioner of Mokshapatta. And professionally, I'm earning very good readings for abroad. And my colleagues here, many of my colleagues are here who have repeatedly come to me. So it is, it's not limited. The range is not limited. Mokshapatta, my friends, my colleagues, my family, and everybody else, and even my mentor for that matter, what I mentioned. So I insist, I urge all of you, it's a very good divination tool for personal use. Personally, I have no words to say how every day it is my guidance, it is my remedy, it is my, what to say, it's a soulmate, I can say. So every little and big question, I question it and I get remedies, and I use it with other modalities too. That is the main thing which has come in handy with the Mokshapatta. Vedic switch words, which again is a ma'am's modality, Shweta ma'am teaches it. And these both go hand in hand very much. They match each other, Mokshapatta and Vedic switch words. So it's such a magic happening with Mokshapatta for me. So thank you for ma'am for allowing me to talk, and it's such a great pleasure being with you always. Thank you, No, ma'am. one thing I want to appreciate about Dr. Rupa. Yes. You know, when she joined I Mokshapatta, acknowledge it, ma'am, 100%. was scared of talking. She would never turn on her. She would turn on her camera and she would sit quietly, always smiling but quietly. And whenever I would say, Dr. Rupa, bolo, it would be like, no, Gone. gone. And today, this woman is doing wonders in her life. So thank you so much for allowing me to And be a the part woman of this. behind this woman doing wonders is you, ma'am. Thank you so much. And without a push, it is only a push I can credit all that to, ma'am. It is only you. No, it is not me. It is you. I only showed you a path, but you walked it. So, I mean, thank you for allowing me to be a part of your miracle. And thank you for being there unconditionally for me whenever I need your support. Thank you so It's much. my pleasure always, ma'am. Thank you. Thank you so much. So one thing I will tell everybody, एक गाना था ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे सोनिए. हमारा system कुछ ऐसा है. Once you are connected with us, you are always there. Whether you do another program or not is your choice, but we will always have you in our hearts and minds. Neeta ji. So before Neeta ji starts sharing her journey, I want to tell you all one thing. Neeta ji has been a teacher for all her life. किसी जिंदगी में किसी जन्म में ये मेरी गुरु रही होंगी, and today I would say the pleasure of having been with her and showing her path. So Neeta ji, and one thing, you know, she comes from a background where everything is analytical. So for her to let go of her brain and connect totally and surrender to her own self and to the divine has been her biggest breakthrough through Mokshapatta. That is at least what I feel. And again, out of all my alumni, along with Dr. Rupa, she's the one who does not let go of me, no matter what. She's always there, standing tall and strong, somebody I can depend on. Thank you so much, Neeta ji, for being there for me and for allowing me to be a part of your journey. Good morning to everybody, and thanks to Shweta ji for saying such lovely words. I don't know whether I deserve them or not, but I'm very happy. I'll try to make it short because I know you have come for a purpose. But what I want to tell you is, you just have to do Mokshapatta to get a friend for lifetime.
right? You have a friend for lifetime who's going to guide you every minute. And after some age, I would like to say that you don't feel like asking your questions to others. And the thing is, how can I ask? I'm supposed to be knowing everything. How can I ask somebody? Well, I was plagued with that disease that I knew everything. But let me be very frank, I started my life all over again. Because I'm from the defense background, as she says, very, very clear this thing, what you want to do. And then a professor for 32 years means totally, I thought that was it. That is all what for me. But just about, say, 3 years back, I ventured into something just for the sake of learning. Since I've done enough of my subjects, I'll do this. And this has taken me in such a form that I'm completely into it. And for the main reason why I say मोक्षपट, अगर मैं कहूँ तो मोक्षपट हमारी ही धरोहर है, ठीक है, और हमारी ही बातें उसमें हैं. जैसे हमारे गुरु श्वेता जी ने कहा था, जब शिव पार्वती खेल सकते हैं वहां पर, तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते? क्या जब शिव जी ने पार्वती जी को सारी दुनिया का सब कुछ सिखाया, सिर्फ वो 72 बॉक्सेस में, तो आप सोचिए अगर हम ना सीखे तो वो हमारी अज्ञानता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है. और आप अगर सोचना चाहें तो जो सवाल आप लेके बैठते हैं उसका उत्तर आपको मिलता ही है. और अगर आपको और मोडालिटीज करते हैं, जैसे मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं बाकियों से भी चेक करती हूँ, ये इसलिए कि अपने आप को थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए. उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन जरूरत पड़ती है. और बस इतना ही कहूंगी कि शी इज अ वंडरफुल टीचर एंड आई fully acknowledge her as a teacher and a strict one also. मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मुझे इतना वो था कि मेरी लाइट चली गई थी जिस दिन मेरा टेस्ट था. मैं इतनी नर्वस हो गई, बट शी गेव मी नो कंसेशन. माय डियर, नेक्स्ट बैच. आप सोच सकते हैं, जबकि वो मतलब बहुत ज्यादा ही स्नेह रखती है, लेकिन रूल्स आर रूल्स. अगर आप नहीं दे सके तो हम आपके लिए अलग नहीं करेंगे, अब आप नेक्स्ट बैच में आइएगा. तो नेक्स्ट बैच के समय तो इतना लगा, सब लोग बोलने लगे, अपोलोजाइज करने लगे, अरे मैम आपको चांस नहीं मिला, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा वो कर दिया. इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ना. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सिखा के ही छोड़ेंगे वो, इतना ही मुझे कहना है. अगर आप सोचो कि हम कल देख लेंगे रिकॉर्डिंग और आपने क्लास में नहीं पूछा, तो वो बड़े धड़ल्ले से बोलती है कि आपने पढ़ना नहीं है तो फिर बता दो ना. पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. तो ऐसा क्या बोले, प्रेमी गुरु, और जो ऐसा साक्षात गुरु आपको मिले, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए. एंड सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बनाई है वो एल्यूमिनाई है. इसमें हम उनको नहीं तंग करते, हम आपस में इतने सक्षम हो गए हैं कि एक दूसरे से पूछ लेते हैं. जब हमारे बस में नहीं आता तब उनके पास, जैसे बोलते हैं ना, जज के पास तब बातें जाती है, नहीं तो आपस में जो वकील लोग हैं ना वही डिस्कस कर लेते हैं. तो just I'm so sorry. Not a problem. नीता जी का फोन बच गया साइड से. Sorry. Not a problem. I'm so sorry. So this is what I want to share, that you really have to do. If you have not done this, you have missed something in life, because you will never get a guide like this to take you, and you'll never get a mentor like her who's so much and she knows us, each one of us, I think, in and out. She knows our problems. It is not her concern. She doesn't have time to waste. But then it is her way of dealing with us. If you, she never forgets to ask me about my son, and she never forgets to ask about the family. How does it concern her? It doesn't come as a part of the feast by any chance. Okay, so these are the things which really hold us, and I request each one of you to do it. And one more thing I'd like to share. अगर आप और modalities करती हैं, तो मोक्षपट का अगर आपने सच में इसको अपना लिया, तो आप कोई भी आपके पास आता है उसको उत्तर चाहिए होता है, चाहे आप मोक्षपट से दे चाहे टैरो से दे, और उसको सोल्यूशन चाहिए था. तो हमने स्विच वर्ड्स किया है इनके साथ, जो 100% रिजल्ट देता है. तो आप भी मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दे दिया और आपको मिल जाएगा. तो सब रास्ते हैं, रास्तों को अपनाना हमारे ऊपर है. और मैं चाहूंगी कि आप इसको देखें और सोचें, और फिर यही शब्द कहे जो मैं कह रही हूँ, जिंदगी बदल देता है. Thank you so much. Thank you, Shweta ji, for giving me this opportunity. Thank you, Neeta ji, and thank you always for being with me.
Thank you. Thank you Okay. so much. I have you, that is more important. गुरु के लिए जितना शिष्य इम्पोर्टेंट होता है उतना ही शिष्य के लिए गुरु होता है, तो हम दोनों एक ही बोर्ड पे इक्वल बैलेंस में जी रहे हैं. Thank you so much. Thank you so much for being here. Okay, so I'll take a few more questions now. Before we move ahead, 11:55 हुआ है. अगले 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ questions लूंगी regarding the program. Personal questions will start sharp at 12 to 12:45. I'll take all personal questions. Workshop से related किसी को पूछना है तो hand raise करो, और जितने hands raised हैं, if you don't want to ask about the workshop, put them down again. I will come back to personal questions in 5 minutes. Till then, those who want to register, please register, because आज की fee कल नहीं मिलेगी, ये मेरा commitment है. Yes, अंजू जी, unmute करो. हाँ जी, हाय. मुझे प्लीज ये पूछना है कि मैं पर्सनल, आपने बोला कि ये सोल जर्नी के लिए है, तो अगर मैं मेरी प्रॉब्लम्स तो आपको पता है, एक कान की है, हियरिंग प्रॉब्लम, और एक आर्थराइटिस की, थायराइड की, तो इससे डील करना चाहूँ. बिकॉज मैं रीडिंग और उसमें तो जाती नहीं हूँ, हम थोड़ा सा गुरु जी के उसमें है तो नहीं जाते हैं, मैं आपको बता के कर रही हूँ. बट आई वॉन्ट टू डू कि अगर ये मेरे को हेल्प करेगा तो आई रियली वांट टू हेल्प यू. इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपकी ऐसी कौन सी अंदर में सोच है, विश्वास है, जो आपको ये प्रॉब्लम्स में फंसा के रख रहा है. वो हियरिंग प्रॉब्लम दे रहा है, आपका आर्थराइटिस दे रहा है, उसके आगे कैसे बढ़ना है, इट विल हेल्प विद दैट. एंड आपके साथ होना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपके साथ होना. अंजू जी, आई ऑल्सो लव यू. लव यू. आई वुड लव यू. थैंक यू. Manju, recordings will be available for about 1 year. जितने बड़े programs होते हैं उनके लिए, सबके लिए 1 साल तक की recording available होती है. For the smaller program, it is available for 6 months. Yes, Prerak Pujara ji. Hi Shweta ji, nice to hear you. Thank you so much. मुझे मेरा एक as far as the program concerned, मेरा question ये है कि do we need some intuition power or spiritual level to find out the ways from Mokshapath, or it's just like a beginner level? No, Prerak ji, basically ये मोक्षपाठ आपको अपने आप intuitive बना देगा. You don't need to have anything beyond this. I have trained people for whom mokshapath was their first step into this journey. Okay. So you don't need to be at any kind of level to learn mokshapath. Mokshapath will equip you further into becoming better, intuitively, spiritually, a better person. Okay, and one more question regarding this is कि after finishing this course, its certification होने के बाद, graduation होने के बाद, to connect with this energy and to get the perfection in this energy, कितना time daily देना पड़ेगा? Is there any time limit के as and when we pick the board and we can get the answers? As and when you want to work with it, it is enough for you. What I would always recommend is, if you want to train people further, please complete 100 readings before you start training people, so that your grip, your knowledge on the board and the aspects of the board becomes very strong. But even if you spend 2 minutes a day, even if you don't spend 2 minutes a day, it is fine. आपको जब उसकी जरूरत हो आप तब करो. It is not like जैसे healing है या meditation है जिसको हम नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे. Do it as and when you need. There is no time limit. There is no foundation for anything with Mokshapath, except for the fact, have faith in it. Okay, that's great. Okay, thank you very much. Now we'll talk about personal question session. Sure, thank you. Just give me a few minutes and I'll come to you. Right, Sushma ji, please. Sushma ji, please unmute. Sushma ji, please unmute. Okay, I think she's not there. Vanita Dua, please unmute. Vanita Dua, please unmute. Meera sorry, ji, sorry. Yeah. Am I audible? Yes, you're audible. Please. Yeah. I appreciate. I come to your program. I listen every time, and I just love your aura. Itna positive hai, kamal hai. But yes, I am a psychologist by profession and waiting to be retired. Right.
So that is what I'm waiting कि काश कि मैं जल्दी से retire हूँ, then I can join, because these days it's pretty busy for us otherwise, right? So I have been listening. I have been very keen to join your modality. So यही मेरी एक question है कि now that I'm going to retire in a year or two, will it be possible for me to take this path for my post-retirement journey? Will I'll I do? take your personal questions in a while. Right now, I'm just answering workshop related questions. कि ये जो आपके जो मतलब courses हैं, इसको आप use कर सकते हैं. All my courses, whether it is Mokshapatta or any, most of the other programs, they're all targeted at a practitioner or a trainer level. नहीं मैं Self-healer बात level. कर सकती हूँ, मतलब मैं अभी से नहीं, because मैं I would मतलब fresh हो और fresh then I can मतलब use. I would always recommend one thing to everybody. It's only 1 year that I'll be retiring. That's okay. So what I would recommend is do it whenever you feel comfortable with it. Stress लेकर के जो हम सीखते हैं वो stress ही add करता है. When we are in job, we tend to forget because we are not practicing properly and yeah. Not a problem. What you should do is do it when you feel comfortable. Okay. And of course, Mokshapatta के दो round तो होते ही होते हैं हर साल. There are 2 sets, one in the first half of the year, one after. मतलब 2 से 3 बार तो होता ही है. Every quarter normally we try to have one set of Mokshapatta classes. We try, but possible नहीं होता है. So you can register whenever you want to. Great. That is one very important, and of course you'll check and see if I am the suitable candidate to carry it forward. That because I was listening to sir also ना. Sir भी यही मेरी वाली बात नहीं करते कि intuition है क्या, मतलब can we? So of course half of my answer was आपके अंदर है. आपका ऐसा कोई भी skill नहीं है, whether it is intuition, whether it is clairvoyance, clairaudience, any kind of psychic skill is already within you. It just needs to be jhaka-fulfilled. Yeah, that is what I said. You have already given half the answer, but yet again specific to me, right? So I'm waiting. Thank you. Thank you so much. Yes, Meera ji, unmute. Okay. Every time, every time to be with you, it's a really good positive vibes. I always say like that. And another thing I wanted to know कि online program में भी installment हो सकता है? तो सब में installments है. Installments 2 to 3 installments है सब में. In fact, you can just connect with the team or put it on any of the groups. We'll share the details with you on that. Acha, and that's right. Another thing is that live recorded program में how will I get a live recorded program? In what form will we get? Live recordings YouTube जो आप लोगों को हमेशा private videos मिलते हैं. We can't get it in some CDs like that? Or in form of there to live, there is only a YouTube private recordings share. That is what will be shared. But we can't do it on our own. I mean, we can't take it on our own online. I'm sorry, I did not understand. मतलब उसको हम कहीं पर अपने आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते for some time. आप क्यों रिकॉर्ड करेंगे? हम अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना. It's only for learning at that time only. बाद में कैसे करेंगे फिर उसको? मीरा जी, मुझे आपका पर्पस नहीं समझ में आ रहा है. आप मुझसे बाद में बात करो आफ्टर द सेशन एंड आई विल हेल्प यू विद द आंसर. बिकॉज जो आप पूछना चाह रहे हो मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा है. आप ये बात कर रहे हो कि कोर्स खत्म करने के बाद में आप अपना प्रोग्राम कैसे करोगे, या आप क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, मेरे पास वो कब तक, 1 साल तक ही रहेगा. 1 साल में अगर आपने उसको ग्रास्प नहीं किया तो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसको रोज मतलब we can see that and learn that. Why do you need to see it every day? Mokshapatta is not like a ratification. It's understanding life. You want to understand Mokshapatta, understand Mokshapatta from the perspective of life. उसको कितनी बार सुनना is not जरूरी. अध्ययन करना जरूरी है. उसको absorb करना जरूरी है. And trust me, अगर 1 year में आप नहीं कर पाओगे ना, lifetime में नहीं absorb कर पाओगे. क्योंकि इसके लिए receptivity चाहिए. You only need the power of receiving and pulling it in. You don't need anything else. Okay. Yeah, that will be only on my mail. That will be only on my mail. Why do you need it elsewhere? Why do you need it elsewhere? Why do you need to waste your space? YouTube पे 1 साल एक साल रहेगा. आप रोज देखो, आप दिन में 10 बार देखो, वो आपकी choice है. Okay, we cannot take it out on our own. It will be available. All recordings are shared as private videos on the YouTube for all the live sessions.
That is how the recordings will be shared, and that will remain the same as of now. Okay. Okay. Thank you. Thank you. And that is, I'll contact this Pallavi for this. Please, office. Thank you. Thank you. Thank you. Poonam, please unmute yourself. Yes, ma'am. Namaste. Namaste. I have attended many of your workshops on orientation. Workshop नहीं किया, orientation. तो मुझे एक्चुअली अभी जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी, मुझे हीलर प्लस ये रीडर बनना है. बट मेरा इशू क्या है, जैसे कि इंट्यूशन पावर आई एम नॉट हैविंग, तो वो सब चीज मैं डेवलप कर लूंगी. देखो इंट्यूशन क्या होता है, पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज इंट्यूशन? Intuition is something which is connecting with yourself. It is already there. Okay. सिर्फ उसको उठाना है, वो सो गया है, उसको उठाना है, तो वो हो जाएगा. It will happen. तो साथ ही साथ हमारी हीलिंग भी हो जाएगी इस वर्कशॉप में. हीलिंग वर्कशॉप नहीं है, ये एक रीडिंग वर्कशॉप है. इसका मतलब क्या है, हील अपने आप को करोगे या नहीं करोगे, आप रीडिंग करना सीखोगे, और जैसे जैसे आप मोक्षपाठ के बोर्ड को समझोगे, वैसे वैसे आपकी सोच जब बदलेगी, तो जो अंदर जमा हुआ मैल है, गंदगी है, जो अंदर जमा हुआ बिलीव्स है, स्टैग्नेंट बिलीव्स है, वो चेंज होने लगेंगे. जैसे जैसे वो चेंज होगा, things will automatically start changing and you will start becoming more intuitive, because it is our belief that I am not intuitive that is stopping me from being intuitive. True. ओके. और फिर बाद में पूरा सपोर्ट, जैसे कि आप बोल रहे हो पूरा सपोर्ट, और मेरे को खुद को लॉन्च करने का सपोर्ट भी आप करेंगी? नहीं, लॉन्च करने का सपोर्ट आप अपने आप को देंगी. मैं आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो पेपर पे सपोर्ट चाहिए वो दो. ओके, गॉट इट. ठीक है. आई विल रजिस्टर मैम. थैंक यू. मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है किसी की, टू शो मोर टेस्टिमोनियल्स. तो ये 5 जनों के हैंड रेज्ड है, उनके क्वेश्चन आंसर करके मैं 1-2 टेस्टिमोनियल्स आपको यूट्यूब से दिखा देती हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. संगीता प्रसाद जी, कैन आई प्लीज हैव योर क्वेश्चन? अनम्यूट. Hi Shweta, great connecting with you again. Thank you so much. It was a very nice, and I have attended other orientation also. It has been knocking at my door, but I don't know इस बार भी लिखा है मेरा करना या नहीं. I'm very keen on joining it. पहले भी मैंने orientation attend किया, नहीं कर पाई. I was traveling, and this time again the dates are clashing. देखो तो मैं क्या करूं? I really want to do it इतना ज्यादा, and हर बार हो रहा है. हेलो, मेरी एक बात सुनो. लाइफ में जब भी हमें कुछ करना होता है, सामने से कुछ और आता है. It is about prioritizing now. So you have to choose what you want to do. People have done the course traveling across the world. I'm traveling abroad, and so many of us going, like the family going together on a family. देखो मेरी एक बात. No, I just want to know, like I can. तो बाबा, अगर एक आध सेशन, 2 सेशन मिस हो रहे हैं बीच में, तो कवर हो जाएगा रिकॉर्डिंग से. Theoretical sessions can still be covered from the recording. Practical sessions में physically present होना बहुत जरूरी है. See, 16 मैं 17 से अटेंड कर सकती हूँ, but the only thing is मुझे can I speak to Speak to Pallavi. She has the class wise schedule for each batch. उससे मैच कर लो कि कहाँ पे आप आ रहे हो. Okay, one more thing I would like to ask you कि जैसे 2 या 3 सेशन अगर हमारे मिस होते हैं, तो is it possible to attend your next batch or something वो 3 सेशन के लिए as a revision? No, because each batch का context is in a way very different. Okay, because वो recording से वो बात नहीं बनती है जो 1-on-1 की रहती है, वो that satisfaction part नहीं रहता. हर ग्रुप का डिलीवरी फर्क होता है, हर ग्रुप के लिए ना एक कंटेंट का वो फर्क होता है. तो इसलिए I would not recommend that. What I would recommend is go through the recording and come back with anything that you want more elaboration or any context on the next class whenever you join. तो अगर पहले 3 जैसे आप बेसिक्स ही लोगे फर्स्ट 2-3 क्लासेस में, फर्स्ट 2-3 अगर मिस हो गए, तो वो रिकॉर्डिंग से that will be enough कि fourth onwards I can pick up. First class is obviously your introduction and all. Second and third class will be row number 1 and 2. वो चल जाएगा, वर्केबल है, मतलब डूएबल है, हो सकता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड नोट्स भी होंगे ना रो नंबर 1 and 2 के, तो मैनेजेबल है वो. बट practical classes में you need to be present, because if you miss out on practical classes then it is a troublesome case for you.
Okay, one more last question. Once I pay the fee, is it possible to get those 3? You must be having the recording. तो उसके 3 classes के पहले हो जाए, so that once I start traveling उसके पहले तो मैं free हूँ. नहीं तो नहीं, वो क्लास तो पहले लाइव होगा करने ना, नहीं. क्लास तो लाइव होगा तभी तो रिकॉर्डिंग दूंगी संगीता जी. ओके, पहले मैं वो वाला आपको जो बोलते हैं. 75 रिकॉर्डेड नोट्स हैं वो आपको पहले मिल जाएंगे. एज यू विल रजिस्टर यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट. Okay. But the class recording can only be given to you post the class, after the class. That is not recorded, that is live. जैसे अभी सेशन है वैसे लाइव होगा. Yeah, right. तो मैं 75 रिकॉर्डेड नोट्स तो उन लोग जैसे जैसे लोगों के रजिस्ट्रेशन आएंगे इन द नेक्स्ट 2 days, whoever registers, I will give them on Wednesday or Thursday. All that access will be given. But beyond that, तो आपका उस पर डिपेंड करेगा क्लास टू क्लास. And किसी और बैच का you won't recommend that. नहीं, I will not, because देखो हर बैच में ना एक नया ओपनिंग है, एक नया ग्रोथ है. So I would recommend stick with your batch. Trust me, it is better. Okay. Okay, let's see. तो Keeping आप my पल्लवी fingers से crossed. बात करके देख लो. मुझे एग्जैक्टली डेट्स मुझे अभी नहीं, यहाँ पे मेरे पास शेड्यूल नहीं है. Talk to Pallavi. She will be able to give you the exact dates, so you can see how many your classes you're missing. If it is doable, if it is not doable, because see the classes are not every day also, no? So you might not even miss 2 or 3. So you just Right. check with her what is happening. Take the Okay. schedule from her and understand. Done. Thank you. Thank you so much. And a personal question, I'll have to wait for. Just wait. Let me finish with this, then wait. Thank you. Thank you so Pallavi, much. please connect with Miss Monica Madan. She's having some problem with the payment. को कह रहे हैं पेमेंट लिंक वर्क नहीं कर रहा है. एक बार आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज. गजानंद वासवक, प्लीज आप अनम्यूट करें. क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी. प्लीज अनम्यूट. अनम्यूट करें सर, आप म्यूट पे हैं. हेलो. यस, नाउ आई कैन हियर यू. हाँ मैडम, ऑफलाइन कोर्सेज से कभी से ऑफलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा आपका. एक सेकंड में आपको डेट देती हूँ. और कहाँ पे होगा? ये दिल्ली एनसीआर में होगा, साउथ दिल्ली में होगा. मुंबई में नहीं है? नहीं जी, अभी फिलहाल बॉम्बे में. मुंबई पुणे में नहीं होगा? नहीं, अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है. ओके, डेट बताइए. डेट शुरू हो रहा है. पहली क्लास इसकी होगी 15th of April, 15 अप्रैल. 15. हाँ, बाकी का आप अगर मुझे अपना नंबर यहाँ चैट में शेयर कर दें, जो को होस्ट है टीम ट्रांसेंडिंग बिलीव्स के साथ, वो आपको शेड्यूल दे देंगे क्लास का. ओके, तो और इसमें और क्या सिखाएंगे? मतलब आप मुझे तो समझा, लेकिन पूरा वैसे मोक्षपाठ बोर्ड है. न्यूमरोलॉजी में जानता हूँ थोड़ा. नहीं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं. नहीं, मैं मेडिटेशन करता हूँ. इसके अलावा और उसमें क्या सिखाएंगे आप? देखिए, मोक्षपाठ बेसिकली आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करता है, और जब अगर आप काउंसलर हैं, आप लोगों को काउंसलिंग वगैरह देते हैं, उसमें आपकी हेल्प करता है. सो गाइडेंस, ब्लॉक्स और सॉल्यूशंस जो है आपकी लाइफ में, कार्मिक बैगेजेस हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजों में आपकी वो हेल्प करेगा. ओके, इसमें अपना प्रेडिक्शन या परफेक्शन कितना आता है? परफेक्शन देखिए, मैंने वैसे अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी कोई भी रीडिंग आज तक पिछले 5-6 साल में कभी भी गलत नहीं हुई है. लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि आप 90% परफेक्शन समझ के चलिए, क्योंकि 10% अगर हम अपनी चॉइस चेंज कर ले, अपना कर्म बदल लें, तो फिर प्रेडिक्शन भी चेंज हो जाएगी. उसके लिए डेट ऑफ बर्थ और कुछ जरूरी नहीं है? कुछ भी जरूरत नहीं है जी. ओके, ठीक है. इनका मुझे ऑफलाइन का भेज दीजिए, मैं नंबर देता हूँ. हाँ, आप नंबर डाल दीजिए टीम ट्रांसेंडिंग बिलीव्स को यहाँ पे चैट में, वो आपको कनेक्ट कर देंगे. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. जिनको भी पल्लवी से या टीम में किसी से बात करनी है, कृष्णा से, पल्लवी से, आप ना टीम ट्रांसेंडिंग बिलीव्स यहाँ को होस्ट है, उनको एक मैसेज छोड़ दो. As soon as you will leave a message with your number to them, they will contact you. Because आप मुझे यहाँ पे चैट में बोलोगे, मैं आप उनको मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगी. टीम ट्रांसेंडिंग बिलीव्स को करो, या फिर जो मोबाइल नंबर है चैट में दिया हुआ है 7669315157, आप उस पे व्हाट्सएप कर लो, या मैसेज कर दो, या कॉल कर लो. दे विल गेट बैक टू यू. Okay. Any other question only regarding the program? Because then we'll move forward. Yes, Manju. Unmute. Ma'am, offline class 10 to 6 p.m.
Saturday, Sunday, both days. Saturday, Sunday, both days, and for 3 weekends basically, 3.5 weekends. छह क्लास टोटल में चाहिए यार, उतना टाइम चाहिए रहेगा आप लोगों को ग्रास्प करने में. एंड आधा लाइक 1 day विल बी मेनली योर असेसमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन आंसर्स, जो भी कुछ लास्ट कोरिलेटिंग सेशन होगा, एंड आप लोगों का सर्टिफिकेशन. So 6.5 classes tentative. डेट्स अगर एग्जैक्ट चाहिए तो प्लीज पल्लवी से कनेक्ट कर लीजिए और डेट्स ले लीजिए. Right. Thank you. सोनिया जी अनम्यूट प्लीज. सोनिया जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं. Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yeah, one question. Suppose if I do this course, then can I heal everything, like मेरी family का, for my husband, for my kids? Sonia ji, healing is not a part of Mokshapatta. You can identify the problem from Mokshapatta. Identify. I'm Find sorry, the my question is solution. wrong. Yeah, And yeah, find the yeah. solution. Yes, that you can do. But healing will come in a different perspective. Okay, so finding and telling them the solution that we will be able to manage. Yes. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Just 1 second, guys. Yes. Next कौन है? किसी और का क्वेश्चन ओनली वर्कशॉप रिलेटेड है तो पूछ लो प्लीज फटाफट. माधवी जी, माधवी टीवी. Good morning, ma'am. Good morning. I want to know about better whether when does the classes will be start? Classes will be starting on 10th and 11th of April for the online batch, and offline batch on 15th. Can you just mute yourself? बहुत disturbance है. माधवी जी आपके ना ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है. ऑनलाइन क्लासेस, वन बैच इज स्टार्टिंग ऑन द 10th, मतलब 10th 11th 12th में दोनों बैच मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्ट हो रहे हैं. एंड आफ्टर जो ऑफलाइन बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 15th of April. So I will just reshare the details of the 3 batches जिसमें डेट टाइम इतना आपको दिया हुआ है. बाकी for any query reach out to Pallavi, that is better because she will be able to give you exact information. Radha ji unmute. मैडम मुझे ये बात पूछना है कि जो ऑफलाइन में आप सिखाओगे वही ऑनलाइन में सेम टू सेम सिखाना? देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा फर्क होता है. क्यों होता है? ऑफलाइन के अंदर जब हम मिलते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जीज का फर्क होता है, हम ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे होते हैं तो चीजें ज्यादा डिस्कस होती हैं. अगर आप मुझसे ये पूछो ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन बेटर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों कंटेंट मोर ओवर सेम होता है. बट आई पर्सनली फील ऑफलाइन का जो एक अपना एक्सपीरियंस होता है दैट इज मोर प्रोफाउंड देन ऑनलाइन. तो इसलिए आप बॉम्बे में भी आपका एक बार एक काम करो राधा जी, आप ग्रुप बनाओ, मैं आ जाऊंगी. मुझे आप मेरी ज्वाइन हेल्प करना है करो, आप हेल्प करो मेरा ग्रुप बनाने में. 15 लोगों का मैं आके क्लासेस ले. ओके, थैंक यू. थैंक यू. वीनू सचदेव प्लीज अनम्यूट. Hello, I am. Can I take my installment plan? Yes, please. Installments can be 3. Pallavi, can you please connect with Veenu Sachdev and help her with the installment plans? Yeah, I want to register today only. Okay, ma'am. Thank you so much. And CK जैन जी, आप चेंज नहीं कर सकते 2-3 क्लास के बाद में. भी आप कोई भी बैच के लिए रजिस्टर कर लो बिफोर द क्लास स्टार्ट. जो बैच आपको चेंज करना है कर लो. जिस बैच के साथ क्लास स्टार्ट करोगे आपने उसी बैच में रह के काम करना है. But I will get the recordings now for 3 days. Yeah, Yeah, I will be recordings of all the online programs are available. All. okay. Okay, thank you. Thank you. Rachna ji, Rachna Jain, may I have your question, please, quickly? हेलो हाँ जी. मैम, ये कहना मेरा काम, हमारा एक पुश्तैनी घर है, उसकी काफी अभी सारी. उसके लिए रुकेंगे 5 मिनट रुकेंगे. अभी जो 2-4 लोगों के क्वेश्चन हो रहे हैं फिर मैं ठीक है, आपके ठीक पास है. पर्सनल. ओके. जी, रश्मि, any question related to workshop, please ask me.
पर्सनल रीडिंग के लिए 5 मिनट रुकेंगे. Quickly tell me if there's any question. Please unmute fast. सोनिया रघुवंशी जी पुणे आने का कोई प्लान नहीं. ग्रुप बना दो, मैं आ जाऊंगी पक्का. हेल्प मी मेक अ ग्रुप ऑफ 15. आई विल कम. समर वेकेशंस आ रहे हैं, मेरे बेटे की छुट्टी होगी, मैं आके क्लासेस ले जाऊंगी आपके लिए. ओके, सो आई गेस अब जितने क्वेश्चंस बचते हैं वो बचते हैं पर्सनल क्वेश्चंस. सो व्हाट वील डू इज आई नीड अ 2 मिनट ब्रेक. आप लोग भी 2 मिनट का एक ब्रेक लो मेरे साथ साथ. फटाफट पानी चाय कॉफी जिसको जो लेकर आना है लेकर आ जाओ. एंड देन वील स्टार्ट विद द पर्सनल क्वेश्चंस एंड आंसर्स. So give me 2 minutes and let's come back quickly and then start. Hello. Can I speak? Hello. Yes, ma'am. Yeah. Right now, I'm not in a position to make the online payment. I'll have to make a bank transaction. So Ma'am, can you please call me after? Ma'am, hello. Yeah. Can I do it afterwards? I am Pallavi from the Transcending Belief. Can you please call me after the orientation? Yeah, that's what I wanted to check with you. If I Yeah. can make the payment because I didn't want to miss this. What's your problem? online session. Oh, no problem, ma'am. What's your name? Rashmi Ratnakar. Rashmi. One second. I'll just put your name. Please call me after the orientation, okay? I'll just clear your question. Rashmi Ratnakar is my name, and I'll get back to you. Yeah, ma'am. Otherwise, you can just put your mobile number in chat. 9 Ma'am, your voice is your voice is not cleared. 811. I'll just put it in the chat. Yeah, Rashmi, sure. please put Thank it you. in the chat. Thank you so much. And Veenu, आप मुझे मत भेजना, आप पल्लवी को अपना नंबर भेजना, Rashmi, please. And now coming back to all our questions, personal questions. Now before we start, मैं एक question सबके लिए answer करूंगी. And I'm here with you till 1 o'clock. So we'll do very quick questions. पहले चालू करते हैं from मेहरू जी. मेरू जी, if you want to know your soul journey एक क्वेश्चन से नहीं क्रिएट होगी. For that we need to take out your entire journey का reading. So वो मैं आपके लिए अभी नहीं निकाल पाऊंगी. Those who want to ask about the plans like for the installments, connect with Pallavi post the session. ये offer आज का जो है that will be valid and applicable till about 5 PM today. मैं बिना टीम से पूछे बोल दे रही हूँ. 5 बजे तक आप आज discounted price पे work कर सकते हो. Not an issue. And then we will move ahead from tomorrow, from after 5 o'clock. 21,000 and 31,000 is the fee payable. Okay, let us start. Pallavi, please, Shipra Chaudhary का मेरे पास, Shipra Chaudhary नहीं, sorry, Madhvi TV का मेरे पास message आया है that she needs you to connect with me. Please connect with her later. Yeah, sure, ma'am. So let us start. पहले 5 क्वेश्चन चैट में है उनके ले रही हूँ, फिर मैं सारे जो जिनका हैंड रेज्ड है बोलूंगी. I would prefer if you all can give your questions directly instead of putting it on chat. But nonetheless, let's start with chat में जो है. So सुषमा जी का क्वेश्चन है, should I start my career with Reiki or tarot reading? So Sushma ji, I would recommend you, first of all, this career is going to be good for you. Any kind of spiritual line is good for you. And career in Reiki is better to start off with. Tarot reading can come after that. Dono positive hai, but Reiki will give you better results. Kalyani ji, health relationship can be sorted for self and others. Yes. ज्योति क्वेश्चन देना पड़ेगा तभी मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगी. सोनिया रघुवंशी wants to talk to Pallavi. Okay, let's start. Prirag ji, can I please have your question? And I would request everybody to switch on their cameras while they ask their question. That will really help me. Please unmute, sir. Hi again. मेरा बहुत ही specific question है. I have applied for a Canada visa. So up to when I will get it?
So there are very high chances of this visa coming in by April end. Okay, that's fine. And any blockages or any remedies for that? So what I would recommend you to do is, I'm giving you 2 Vedic switch words which you can chant for this, just for your visa. And please chant it with the intention that your visa comes to you in the right time, in the right place, in the right way, and so that it gives you what you truly want. ऐसा नहीं हो कि वहां जाके problem हो. So we want to have everything in the best way. So you will chant Gandiv and Agneya. Sorry, once again. Gandiv, Gandhi. Okay. and Agneya. Agneya. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Sunita Chabra, I am going to ask questions to those people first जिनका hands raised है. Please unmute. Yes. So my question is actually now I am 52. I have raised my daughters. So now I want to do a business, international business. So which can in pearls. I want to sell pearls. Yes, Hyderabadi pearls. Yes, it is in your highest good to do that. You can do it. It's a positive path for you, and this will bring you great happiness. Thank you very But much. that does not mean, but great happiness does not mean कि शुरुआत में थोड़ी अड़चन नहीं है. So just sustain, and this path will overall bring you everything that you want. But initial startup में थोड़ा दिक्कत होगा, which is there for everybody and anybody. So just don't let go of your faith in yourself and your work. You will get the results. Thank you. Thank you so much. एक मिनट. जी, Gajanan ji, can I have your question, please? यस हेलो. हाँ जी. हाँ, मेरा क्वेश्चन है बेटी का शादी के लिए. अभी शादी मेरे बेटी की कब तक फाइनल हो सकती है? मैं उनका नाम जान सकती हूँ, please? अरुंधति. So आपका उनका मैच तो उनको इस साल मिल जाएगा, लेकिन शादी आपकी इस साल के अंदर एंगेजमेंट हो जाएगा. ओके. लेकिन मैच आपको थोड़ा लेट मिलेगा, मतलब शादी लेट होगी. लेट शादी जो होगी, मतलब आपको इस साल के एंड तक उनका एंगेजमेंट मिल जाएगा. You will be able to find the right match for her. Wedding will happen in 2024 mostly. 2024. हाँ जी, इसको अगर आपको प्रीपोन करना है, तो प्रीपोन करने के लिए you can ask her to chant 2 Vedic switch words. 1 Vedic switch word I think is more than enough. Agneya will help her fasten the process. अग्नि क्या चांट करना है? अग्नेय को चांट करना है. अग्नेय विद द इंटेंशन कि उनको जिनसे मिलना है वो जल्दी मिल जाए. और अगर आपको ये लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है कि लड़का कौन होना चाहिए, ऑप्शंस है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो रीम चांट करेंगे साथ में. क्या? रीम, HREEM. रीम आपको क्लैरिटी भी देगा. हाँ. अच्छा, वो अभी इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अभी शादी एंगेजमेंट 23 में हो जाएगी और उसका मैरिज 24 में हो जाएगा. फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है जी. ओके. तो ये रीम चांटिंग करेंगे तो रीम चांटिंग करने से अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपके लिए कौन सा करेक्ट पाथ है आपको वो पता चल जाएगा. और अग्नेय से चीजें थोड़ा जल्दी होंगी, मोमेंटम में आ जाएंगी. अब क्या इंटेंशन से आप वर्क करेंगे, उस इंटेंशन से इस चीज को थोड़ा पुल कर सकते हो. आज की एनर्जी के हिसाब से 2024 में शादी है. ओके. अच्छा, बेटी ने करना चाहिए चैंटिंग या मैं किया तो चल सकता? अगर आपकी डॉटर करें तो बेटर है, नहीं तो आप अपनी मतलब दैट इज वे 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 बेटर. अगर आपकी डॉटर को करें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगते हैं. एक माला का अगर एक माला भी रोज कर लें तो बहुत है उनके लिए. नहीं, बात तो टाइम की नहीं है, उसको डेथ होने की बात है. आप बोल के देखिए जहां पे चाह वहां रहा. बट इट इज बेटर इफ शी डज इट, बिकॉज अभी मतलब
इसकी चांट जब हम किसी और के लिए चांट करते हैं तो वैदिक स्विच वर्ड्स में सिद्धि करनी पड़ती है, तो Okay. सिद्धि आप लोगों को नहीं आती, सिद्धि Correct. वर्कशॉप में ही होती है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आप खुद अपनी डॉटर को करने दें। ओके, टाइमिंग क्या उसका करने के? कोई टाइम कर सकते हो? नो टाइम, एनी टाइम, सुबह शाम रात जब मन चाहे तब कर सकती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। हितेश जी, प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट करें सर। Please unmute. Yeah, hello, ma'am. Hello. Good morning. Just wanted to know one question. How will be my job stability and my basically career in the near future? Because I'm right now jobless and I've got a health issues also. So how do you see next few years of my life in terms of job and health? So job मिलने के chances इस साल में है आपको. You should be able to get one. But what I'm understanding is that somewhere or the other आप एक specific line में देख रहे हैं, एक specific चीज देख रहे हैं. थोड़ा अपना दायरा of looking for a job बढ़ाएं. Become a little more open to other fields or other, I would say, profiles जहां पर आप अपनी knowledge, अपने skill को use कर सकते हैं. Okay, ma'am, just sorry to Yeah. interrupt. Actually, I'm into spirituality also, and I'm into occult also. I've done few numerology courses, and I was into sales and marketing. So since I had lost my job, maybe think that divine is giving me this guidance to take this transformation of undergoing this spiritual journey and make occult as a profession. Do you think me Yes, getting occult successful is in a that, good profession for you. I'll be successful that? Occult is a good profession, and this will give you a lot of growth and balance in your life, physically also, financially also, and internally also. So this is a better opportunity for, this is a better choice for you in comparison to your sales job. Sales अभी इस वक्त आपके लिए जहां पे है वहीं छोड़ देगा, ये फील्ड आपको आगे लेकर जाएगी. Thanks a lot. Thank you very much, ma'am. Thank you. God Thank bless you. you. Thank you. जिनका कैमरा ऑन है, पहली अपॉर्चुनिटी उनकी. सोनल जी. Thank you. I want to know, how do I enhance my professional journey and improve my finances? Sorry, I can't. Somewhere or the other, there is a lack of awareness of what you truly want to create. So it's not that मेरे को पैसा कितना चाहिए, मेरे को कहाँ जाना है, but exactly क्या create करना है, उसकी awareness complete नहीं है. अक्सर हमें ये लगता है ना, पैसा होता है तो लाइफ में सब चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, बट ऐसा होता नहीं है. मनी हमें सिर्फ इसलिए चाहिए because money can buy us certain things. So our awareness has to be of what that money needs to buy for us. So what is stopping you right now is the awareness. So the first thing that you need to create in your life is awareness of what you truly desire. And trust me, money is not what we desire. We desire a car, we desire a house, we desire a world tour, we desire, a particular program. We never desire. जब तक पैसे के पीछे भागोगे, आपको आपका solution नहीं मिलेगा. Identify what you truly want to create and then move from there. You will be automatically able to create the path ahead for yourself. Okay. Thank Any you so much. skills do you suggest to enhance? See, I can't take more than one question. Already 27 people are waiting for me. So one question. Ma'am, can you answer my question first, please? I need to go. Who is there? I don't know. कौन है? Vinu Sajde. हाँ जी, वीनू जी बोलो. Since I'm a professional planning leader, how will be my 23 as in of terms of finances and getting work? Okay. So 2023 is going to be a good year for you in terms of attaining more knowledge.
It is more going to be knowledge. very And good. You will learn more and you will be able to utilize what you know into creating what you want. And financially, financially इतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज आप दूसरों को देखोगे और ये सोचोगे कि उनके पास वो क्यों ग्रो कर पा रहे हैं और मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रही. This feeling of wanting what the other person is creating or the path that the other person is walking will stop you. So you need to let go. You need to stop looking around and be in surrender to one fact कि जो आपको मिल रहा है वो आपके पाथ के हिसाब से ठीक है. The day you surrender to the divine with this belief that I am willing to receive whatever is meant for me, उस दिन आपका फाइनेंशियल ब्लॉक खुल जाएगा. Okay, okay. Anything to chant? Not for you. For this, it is more of internal that I will not believe. So every time you start looking at the other person, you will tell yourself, no, I am getting what I deserve, what I desire, and what is right for me. Okay? Okay, thank you so much. Thank you so much. Sangeeta ji, Sangeeta Prasad. या थैंक यू सो मच श्वेता. मेरा वही है, आई थिंक लास्ट ईयर ऑल्सो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था. माय डॉटर्स शादी कब होएगी एंड हाउ टू गो अबाउट इट. हम बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आकर के रुक काम जाते हैं. करती हूँ, डेट पूछने से पहले ये पूछ लेती हूँ ब्लॉक क्या है. डेट को छोड़ देते हैं, पहले ब्लॉक पे वर्क करो, डेट अपने आप पास आ जाएगी. ओके, क्या करते हैं अब की बार. लास्ट टाइम आपने डेट पूछी थी, इस बार हम ब्लॉक पूछ लेते हैं. लास्ट टाइम हमने ब्लॉक पे वर्क नहीं किया था. What's her name? आर्शिया प्रसाद. ARSHIYAPRASAD. एक मुझे बात बताओ, उनके बहुत सारे ख्याल है क्या of what she wants in her life and her life partner? Lot of expectations in terms of what she herself desires, not just from her partner, but from life and from her own self. हाँ, आई थिंक इस कैटेगरी में हाँ बोल सकते हैं. है ना? So what she needs to let go is let go of these expectations. Because जब उनके आगे कुछ ऐसा भी आता है जो अच्छा है, जो उनसे compatible है, कहीं ना कहीं कोई खोट निकल जाती है कि यार ये फिट इन नहीं होता. परफेक्शन नहीं मिलेगी लाइफ में. परफेक्शन इज एन इल्यूजन. सो कहीं ना कहीं ये जो DDLJ एंड बॉलीवुड टॉलीवुड एंड MVs का भूत है उसको Otherwise, खत्म she's करना very no, she's a very down to earth girl. ऐसा नहीं है. बट मुझे ऐसे मतलब जो वो डायलॉग्स भी बोलती है मुझे लगता है इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हर. मे बी दिस इज नॉट डेस्टिन्ड एंड दैट इज व्हाई जो वो नॉर्मली वो वैसे जजमेंट्स नहीं करती है. देखो मैं आपको एक बात बोलूं संगीता जी, एवरी पर्सन हैज अ सेट ऑफ ड्रीम्स वेदर दे टॉक अबाउट इट और नॉट. सपने कभी कभी हमारी पंख को उड़ान देते हैं तो कभी कभी हमारे पंख काट भी देते हैं. इस वक्त उनके सपने और उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्हें बांध के बैठे हैं. So what she needs to understand is that perfection नहीं मिलेगा in life, not from herself, not from life, and not from her partner. Because perfection is not just coming from her partner. It's a desire of a perfect partner. It is also a desire for a perfect life. And as a spiritualist, हम ये जानते हैं हम कितना भी evolve हो जाए, perfection नहीं है. Completion हो सकता है, perfection नहीं हो सकता. So no. So what she needs to understand is only one thing. जब कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीजें उनके सामने आती हैं, इंस्टेड ऑफ सीइंग द बैड इन इट, शी शुड स्टार्ट सीइंग द पॉसिबिलिटीज इन इट. Only then can destiny come and stand in front of her, because not only in her marriage but in other aspects of her life also this will start showing up and stopping her. डाउन टू अर्थ होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी सोच में वो चीज नहीं है. Down to earth is a नहीं, because behavior. there are certain things like qualification या कुछ चीजें ऐसी है, like looks wise also she is ready to compromise. But एक particular profile में अगर हम देखें कि मतलब हाँ ये चीज okay you can let go, जैसे एज का ले लो. देखो मेरी एक बात सुनो. जिंदगी में जो जिसके लिए बना है ना वो ही उसके लिए बना है. वो कब तक मिलेगा जो बना है, वही कहाँ छुपा बैठा है. अगर इस सोच से चलेंगी तो अगले 2 साल अभी आप सोच भी नहीं सकते. She has to let go of her own parameters and perspective. I'm not saying give up all your expectations. I'm just saying अपना दायरा बढ़ा. नहीं बढ़ाओगे तो प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें?
प्रैक्टिकली अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करोगे. When you see, the biggest thing is when we see a bio or a CV of a person, we start seeing the negatives, what doesn't fit in. The first thing you need to see is what fits in. And she needs to prioritize herself. What is it that she wants? She will never get everything. So, you say looks are not important for me, but education is important. Now, everybody can't be a PhD. So please prioritize. एक basic level of education बना लो कि भाई इतना पढ़ा होना चाहिए, but don't only focus on a PhD or an MBA, right? After all, an MBA का degree is not what you need to live with. You need to live with the person. Yeah, right. So you need Is to there expand any your thoughts. possibility of getting the timeline as such? Later, that will come later, because this is stopping her 2 years with this particular energy. 2 years अभी कुछ नहीं है. तो इस एनर्जी पे पहले वर्क करो, फिर टाइमलाइन निकलवाओ, तो बेटर है. इस टाइमलाइन के साथ में 2025 तक कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे. बिगनिंग ऑफ 2025, एग्जैक्ट 2 years ले लो आप. Any chance, anything in particular that Later, can that's sort all this later. out? Sangeeta That ji, can sort this out. one question each. I've done Done. your one question, please. Okay, Thank you. thank you so much. Thank you. Shweta Disha, unmute. हाँ मैम, मुझे भी एक्चुअली मेरे सिस के लिए पूछना था कि मेरे सिस मेघा, मेरी एल्डर सिस्टर है, वो भी मैरिज के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर कुछ ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है. एंड शी इज 41 नाउ, तो उसके लिए कुछ मुझे. She has to, so उनका 2 चीज का ब्लॉक है. एक तो सबसे बड़ी ब्लॉक है, वो लोगों की बहुत सुनती है. जो उनको कोई कुछ कहता है वो उसमें बह जाती है. ऐसा कुछ है उनके साथ. She believes a lot in what people tell her. So marriage should be like this. She'll believe it. And somewhere or the other, she wants what she thinks is the ideal marriage of her friends or of her family members. वो सब छोड़ना पड़ेगा. अभी एक एक्चुअली है उनके साथ, पर अभी उनकी मम्मी, मतलब जिसके साथ उसका मतलब ट्यूनिंग जम रहा है, तो वो लड़के की मम्मी ना तो अभी उसके लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं. उसको जिसमें पसंद आता है उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं. She has to work on her own thoughts. देखो मैं फिर बता रही हूँ, उसका बार बार आ रहा है प्योरिफिकेशन, एनवी, एवरेज, बैड कंपनी. मैंने 4 बार डाइस देखा, चारों बार उसी में हूँ. इसके ऊपर कंट्रोल. थॉट्स. इसके ऊपर कंट्रोल का मतलब क्या है? पहली बात, ये नहीं देखना सामने का हस्बैंड कैसा है, सामने वाले का पार्टनरशिप कैसा है, सामने वाले को हम क्या देख के चूज कर रहे हैं. Becoming more practical, letting go of expectations from from sources of information कि भाई ये जो information मिला है वो सही है, इसने जो मुझे बोला है वो ठीक है. अपने आप से सोचना है मेरे लिए क्या ठीक है. एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर वो वर्क करेगी तो अगले 1 साल तक तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी. She needs to work on her own self. ठीक है श्वेता, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. शीतल कदम, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए शीतल. Yes. Thank you so much. Actually, I'm into like last from 5 years, I'm staying with my parents. Okay. And I'm going through a divorce process, but that divorce process has been started yet. And I wanted to come, like, मुझे वो खत्म करना है, वो चीज को खत्म करना है जिंदगी से, उसमें से निकलना है मुझे बाहर, बट आई कांट, होता है ना, वो बाहर निकल नहीं पा रही. एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय न्यू जर्नी, बिकॉज मुझे एक हीलर में खुद को देख रही हूँ कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन मैं कहाँ तक सकूँ मुझे ही नहीं पता चला है. इस साल के एंड तक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, you will have to actually choose what you want from this divorce, because ज्यादा जितना इसको रिजिडली होल्ड करके रहोगे ना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं क्रिएट कर पाओगे. अगर मैं ये देखूं, आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, करियर बिना डिवोर्स के भी स्टार्ट हो सकता है, वो आप स्टार्ट करो, वो आपके लिए राइट टाइम है. डिवोर्स होने की वेट मत करो. और करियर भी जब स्टार्ट करोगे तो इसलिए मत स्टार्ट करना कि दुनिया को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इसलिए दिखाना क्योंकि वो मेरे लिए जरूरत है. अगर ये ले आए ना
I need to prove to myself. कल्याण हो जाएगा, फिर आप नहीं create कर पाओगे. Okay. So Okay. am I become a healer? मुझे Now, हमेशा I लगता can only रहता है. answer one question for you right now, Sorry. Sheetal, because there are many Okay. people waiting. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Swagat, can I have your question, please? And please mute करते जाओ अपने question के बाद में. मैम Swagat. गुड आफ्टरनून मैम. Yes. Good afternoon. मैम क्वेश्चन ये था कि परमानेंट जॉब कब तक मिलेगी? इस परमानेंट जॉब कब तक मिलेगी? अभी आपके पास जॉब है? नो नो नो. अगस्त तक. अगस्त के पहले चांस नहीं है. अगस्त के पहले मैंने जितने मंथ्स पूछे हैं सबके लिए नो 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 आया है. अगस्त तक मिलने का चांस है. कीप ऑन वर्किंग ऑन इट एंड आई वुड से जब भी अप्लाई करो इस एक्सपेक्टेशन के साथ करना जो भी आपके लिए होगा बेस्ट होगा. जी मैम श्योर. मैम एनीथिंग टू चैन? Will it For you, that will you can chant Reem. That will give you more clarity. ma'am sorry can't hear that word. Reem, What to Reem. chant? Reem. HREEM. Reem. Okay ma'am. Thank you so much. Arvind, thank you. Arvinder ji, can I have your question, please? Yes, thank you so much. Okay, so I am sort of a healer. I've learned quite a few modalities. I don't really practice, so I understand what's going on. Well, since 2012, I've been going through within my family, not with myself, but within my family, a lot of health-related issues. So, like my husband fell ill in 2012, he passed away in 2020. Then immediately after he passed away. My son is 35 years old. You're on mute. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Okay, I'm sorry. So immediately after my husband passed away in 2020, my son fell sick. He developed pancreatitis and he's been suffering with that. So he's not able to do anything. So I'm finding a pattern over here in my life. So I just want to know anything I can do regarding that so that, I can move forward. And because of all this, like finances are absolutely down the drain. I'm the only working person. Somewhere or the other, no, you need to make some harsh decisions in life. कहीं ना कहीं ये decisions आपकी personal choices से भी related हैं, personal thoughts से भी related हैं, and perspective of living से भी related हैं. Number one, you need to understand that life and death is not yours to counter, comment, or tweak. That is divine plan for each and every person. So जो ये अंदर से कहीं पे guilt आता है that I am not being able to do enough needs to be eliminated. It needs to be let go. Because जितना आपके थ्रू जिसके लिए लिखा है उतना उसको मिल रहा है regardless of anything and everything that you are doing. And you also need to understand one thing, that sometimes we need to change ourselves internally or create a new us in comparison to whoever we have been living life, whatever we've been living life, to get the desired changes. So it is time for like a big transformational change for you. And you need to work on your belief system. You need to understand that you cannot manage or control what is going on around you. You can only control what you have and what you are. With this, also a part of finance will open up for you. Though I'm not getting a very accurate, I would not say accurate, मेरे को healing line में भी positive answer आ रहा है और मुझे equally positive answer मिल रहा है for like a more commercial line of work, for like a more mainstream professional field. So healing line obviously has a little higher vibration, so that should suit you better. But at this point of time,
your priority should be to empty yourself and to release all the structures and thoughts which are not fitting in here. Because there is That's something which is mainly stopping you, and उसका एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं guilt है, कहीं ना कहीं regret है, and then there is also feeling what have I done to deserve this. These three parameters you need to work on. okay. And for money, what you can do is you can start chanting Shreem, which is the Lakshmi Beej mantra. This will help you in start attracting money and releasing money flows. Thank you. Thank you so Right. much. Thank you. Thank you so much. Dhruti, Dhruti, can I have your question quickly? Please unmute. Ma'am, yeah, ma'am. Good afternoon. Good Ma'am, I afternoon. want to ask, yeah, मैम मुझे पूछना है कि हमारे घर का नहीं हो रहा है, माय हाउस में हम लोग बहुत जगह ट्राई कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट में जाना है, लेकिन सब जगह कुछ ना कुछ होता है और अटकते रहता है मैम, तो वो कब तक आपको होगा? खरीदना है या आपको बेचना है? नहीं, खरीदना है, मीन्स हमारे घर है जो ओल्ड है, जो मीन्स जो रीडेवलपमेंट में जाते हैं, लेकिन वो बात अटक जाती है और हो ही नहीं रहा है। एक तो 20 साल से अटका हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है मैम। एक बात बताओ, जो रीडेवलपमेंट के लिए लैंड अटक रहा है, जब आप रीडेवलपमेंट में देते हो तो एक क्या पर्पस है उसको रीडेवलपमेंट में देने का? व्हाट इज इट विद इन यू? समवेयर और द अदर कोई ऐसी सोच है, जो एक ऐसा विश्वास है दिस इज फॉर मी, ये मेरे को बेनिफिट करेगा, मेरे घर को बेनिफिट करेगा, क्या सोच के साथ देते हो? नहीं, रीडेवलपमेंट में मतलब मीन्स ये ओल्ड बिल्डिंग्स है, तो मीन्स बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई कोई लोग तैयार है, और हम लोगों को तो घर की मीन्स जरूरत है। हम लोग कैसे 200 स्क्वायर फुट के हम लोग इसमें रह रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारी 2 जगह है, तो एक तो बिल्डिंग गिर गई है, उसको 20 साल हो गया है, तो वो नहीं कुछ हो रहा है। मीन्स हम लोग को दूसरा खरीदना भी है, तो पैसे नहीं है। अगर ये रीडेवलपमेंट में जाएगा तो हमें कुछ रिलीफ होगा, बिकॉज हम लोग 20 साल से परेशान है मैम, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सोच तो हमको रहना है, लेकिन प्रॉपरली अभी लाइफ जीनी देखो, है। रीडेवलपमेंट में इस साल में जाना मुश्किल है, इट इज वेरी इस साल डिफिकल्ट, इस साल मुश्किल है। तो मीन्स मेरा ड्रीम हाउस जो मीन्स हमको हाउस चाहिए, वो कब तक होगा मैम? मुझे वही पूछना है। मुझे मेन तो घर चाहिए प्रॉपर, ऐसे जो हम फैमिली रह पहली सके। बात तो ये सोचना छोड़ दो कि आपका जो ड्रीम हाउस है वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं बिकेगा। क्या नहीं ये मिलेगा? आपका ड्रीम हाउस तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपका पुराना घर नहीं बिकेगा या प्लॉट्स नहीं बिकेंगे। इस सोच को छोड़ दो। ओके। This is stopping you from moving ahead and getting what you truly desire. ओके। अभी एटलीस्ट 3 to 4 years की देरी है Dhruti. It will take 3 to 4 years for you to purchase a house, but to shift into a bigger rental house, you can do that within 6 months. रेंटल हाउस फॉर द रेंटल? For the rental 6 months, for purchase about 2-2.5 साल में हाथ बनने लगेगा, but purchase 3 to 3.5 years में होगा। थैंक यू मैम। Lakshita. Yes. Unmute कर लो, sorry, unmute कर लो एक बार दोबारा। Yeah. Hi, Shweta. How are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm doing good. Very happy for. I'm very happy and really very very happy after seeing you. Got a lot of energy and positive vibes also. Thank you, Lakshita. Yeah. बताइए। Yeah, I want to ask about my son. Hmm. Actually, from tomorrow onwards, he's having his 12th class board exams. So how will he do? Like, and afterwards later, which course is ये better? बता, पहले मुझे ये भी बता दो। देखो, लेटर का नहीं, अभी एक क्वेश्चन ले रही हूँ। मुझे ये बता दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डूइंग गुड? प्लीज डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डूइंग गुड। इट हैज टू, क्वेश्चन हैज टू बी स्पेसिफिक। के लिए गुड की सीमा क्या है? Good means like after doing that chakra healing and everything, I'm feeling better after the. नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो ना, बट फॉर योर सन्स रिजल्ट, व्हाट इज अ गुड परसेंटेज फॉर हिम? हाउ मच डू यू वांट हिम टू स्कोर प्लस और माइनस? गिव मी दैट। At least I want to be like a good percentage, like 60% first class. That is important for me. I'm looking for that. That's it. What's his name? Danishk, DANISHQ.
So he'll get a first division, but he has to work for it. It's not an easy choice. If he doesn't put in his effort right now, वो नहीं मिलने वाला because he's not putting in efforts. Yes. Is there anything that this I mean, like I can chant like? So attention के लिए you can chant, but he has to do it. उसके लिए कोई फायदा नहीं है. What you can do is just write down Gandiv on a piece of paper for him, Agneya and Gandiv, and Okay. keep it in his study table and his school bag and all. Just tell him not to carry it in the examination hall. Okay. But to keep it in his belongings and all, so that it will help him. That's it. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Vandana Mardia, may I have your question, please? Vandana ji, unmute करो, unmute. Oh, madam. यार आप लोग भूल जाते हो अनम्यूट करना, फिर मेरे को थोड़ी समझ में आएगा ऐसे. Hi Shweta. Hi. I had been on your class for Diwali Puja. I remember. Okay. My question is my daughter's wedding, younger daughter's wedding, कब तक हो सकता है? Name? Sonal Madia. Within 15 months. And the person she will find for her, like you will find out if it's a love, I don't know, love marriage है कि arranged marriage है, but मैंने वो नहीं check किया. But जिस भी रूप में होगा, this person will be leading further in her life for a big transformation. Okay. It should be within the community. एक मिनट, वो सब अभी वो पहला उसमें जितना था हो गया. एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, बहुत क्वेश्चंस अभी और हैं. So within 15 months, and this person will be good for her. Okay. It will be with the right person because apt religion and austerity आया है. So energies बहुत अच्छी रहेंगी इनकी मैरिज की. प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो सब जगह होती है, लेकिन ये इसको अपनी जो आपकी डॉटर को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ये मैरिज आगे लेकर जाएगी. So it's a good space to be. Okay. Anything to be chanted for her? No, nothing right now because people block. Thank you, Shweta. Thank you. Neeraj, you will have to wait till I get to the questions. I'm answering questions as fast as possible, and I will try and answer as many as possible. But सबका आंसर नहीं हो पाएगा. So please have patience and wait for your turn. अगर आपकी बार turn नहीं मिला, so there is always a next time. Manju Kalra. हेलो मैम. Hello. मैम मैं स्पिरिचुअल अकल्ट साइंस में आगे बढ़ना चाहती हूँ. 2019 में मैंने शुरू की थी, पर मेरे हर्डल्स हैं. मेरे को कभी हेल्थ इशू हो जाता है, कभी ऐसा लगता है समथिंग इज कंट्रोलिंग मी, कभी इमोशनल इश्यूज आते हैं. मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ. मुझे ना कोई ब्लॉकेज फील होती है क्या? इस वक्त आपके लिए प्रोफेशनली स्पिरिचुअल लाइन में वर्क करना ठीक नहीं है बेटा. You need to work on yourself. यस मैम. तो कोई ब्लॉकेजेस हैं जैसे जो मुझे जिन पे काम करना चाहिए? आपको ना कहीं आप बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आप जो भी कुछ सीखते हो, जो भी कुछ वर्क करते हो, उसको एक बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव में, एक लिमिटेड दायरे में अपने लिए यूज करते हो. सीखते तो बहुत हो, अब्सॉर्ब भी करते हो, बट अप्लाई नहीं कर रहे हो. सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई व्हाट यू आर लर्निंग एंड व्हाट यू नीड टू लर्न, व्हाट यू नीड टू अप्लाई टू योर लाइफ. सो 100% ये फोकस के साथ पहले अपने ऊपर वर्क करो कि मुझे अपनी लाइफ को हील करना. सबसे बड़ा ब्लॉक है लैक ऑफ एप्लीकेशन आपके लिए. So whatever you are learning, practice it to get the best benefit first. It is your own, lack of practicability or practical knowledge that is stopping you from moving ahead. आप कुछ दिन काम करते हो, फिर आप रुक जाते हो, फिर कुछ और पकड़ते हो, फिर कुछ दिन करते हो, फिर रुक जाते हो. उसे कंबाइन करो एक जगह पे. चाहे आपको 4 मेथड्स यूज करने हैं, उसका एक सिस्टम बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ, और अपने ऊपर सिर्फ फोकस करते हुए पर्सनल ग्रोथ के लिए पहले अपने आप को हील करो. जैसे जैसे ये पर्सनल लेवल पे हीलिंग होगी, अपने आप रास्ते आगे निकलेंगे. बट बी इमीडिएटली डोंट ट्राई एंड गेट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क विद हीलिंग. ये अभी आपके लिए एक ब्लॉक है. मैम कुछ चैंट कर सकती हूँ कि जिससे कि तुमने तो वैदिक स्विच वर्ड्स किया हुआ है मंजू. अपनी मैनुअल खोलो और देखो. नहीं मैम, मैंने होली उपाय किया था. अच्छा, आपने भी होली उपाय किया है. सो
chant Reem. Reem will give you clarity on what to do. Start chanting Reem. एनी 108 से भी ज्यादा, क्योंकि तो शॉर्ट है सारा Whatever दिन। your choice. जितना करना है, with the intention that you get clarity on what path you need to walk on. जितना chant करना है कर सकते हैं. 1 mala minimum. Thank you, Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Sushma HB, please unmute. Ma'am. Ma'am, namaste, ma'am. Namaste. Ma'am, namaste. Ma'am, I'm searching for a job, ma'am. Ma'am, from 2018, I'm jobless, ma'am. I'm searching for the job. Is there any chance of me getting shortly? देखो इस साल में chances पूरे हैं मिलने के, and what is blocking you is basically from getting a job is that again limited. आपने ना कुछ जैसे roles जो सोचे हुए हैं, आप उसके बाहर जाके नहीं सोच रहे. Reach out to more people. आपको जॉब जो मिलेगा वो जरूरी नहीं है पोर्टल्स के थ्रू मिले. फ्रेंड्स फैमिली की हेल्प से भी मिल सकता है. अपना सीवी अपडेट करो, उसको और टू द पॉइंट बनाओ, which will fit in with today's need, and इस साल में जॉब मिलने का पूरा Ma'am, chance. I'm approaching people, ma'am, but age factor also is there, so they are seeing for the age factor and they are refusing. भाई एज फैक्टर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि आप यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अ सेल्फ ओन्ड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस काइंड ऑफ अ सेटअप, स्टार्टअप. दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, राइट? Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Geeta Jangir, can I have your question? Geeta ji, how are you feeling सबसे पहले? Unmute कर लीजिए Geeta ji. Hi, Shweta. Nice, Hello. nice talking to you. Hello, can you hear me, Shweta? हाँ जी, I can hear you. Please tell me. हाँ, श्वेता, मेरा यही है कि मुझे 2 साल हो गया है ये ऑक्सीजन पे रहते हुए. बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन कहीं आना जाना नहीं कर सकती हूँ. ये ऑक्सीजन ही कंटिन्यूस चाहिए रहता है. बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में तकलीफ होती है. ब्रेथलेसनेस होने लगती है थोड़ा चलने में ही. तो ये कब तक चलेगा, कैसे ठीक होगा, कुछ बताएंगे? क्या 1 मिनट दीजिए. थोड़ा बहुत तो पहले से ठीक हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आई है. गीता जी, सबसे पहले तो अंदर एक बहुत बड़ा बिलीफ है दैट आई नीड टू बी वेल टू लिव बेटर. ये बिलीफ पे वर्क करिए, बिकॉज हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारी फिजिकल बॉडी थोड़ी वीक भी हो सकती है. ये बिलीफ आपको ठीक होने में भी रोक रहा है, क्योंकि आपकी बीमारी को खींच के रख रहा है अपने से. नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपने क्या बोला. आपका एक बिलीफ है कि मुझे अच्छी जिंदगी जीने के लिए फिजिकली फिट होने की जरूरत है. अच्छा अच्छा अच्छा. इस बिलीफ छोड़ो, क्योंकि फिजिकली थोड़ा वीक होके भी अच्छी जिंदगी जी जा सकती है. तो अच्छा ये अच्छा बिलीफ पे वर्क करो, क्योंकि जितनी बार आपका माइंड बोलता है ना मुझे फिजिकली फिट होना है भी मैं जिंदगी जी पाऊंगी, फिर बीमारी की तरफ खिंच जाते हो. इस बिलीफ पे वर्क करो अच्छा प्लीज. अच्छा अच्छा. ओके. बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अच्छा, और कुछ चांट करूं? ये नहीं, बिलीफ अभी को तो एक्सटेंड अब कर. आई थिंक अश्विना इज द हाँ, बेस्ट. ठीक है, अश्विना पे ठीक है. कंटिन्यू हाँ, करो जी. हाँ जी. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. Subhadra Shri Das, can I have your question? Subhadra, question. Hello, ma'am. Hello. Ma'am. Good afternoon. I am from Orissa. Yes. Thank you for today's wonderful session. Every time I connect with yourself to feel the strong aura itself only. Thank you. I am suffering from infertility since 3 years. So today's my question is only I want to know that when and how am I going to conceive or going to become a mother? देखो इस lifetime में it is basically going to be very difficult for you to conceive, because in this lifetime your path does not have motherhood. Now, how do we resolve it? Give me 1 minute. So the first thing that you need to work on is
looking at other mothers and wanting what they have. The feeling of motherhood, because it's a very, very basic thing that when we look at other children and we look at mothers loving their children, we want to experience it. पहले इसको देखना बंद करो. उसको क्या उस पर फीलिंग्स को हटाना है कि क्या? मैं नहीं, हटाना नहीं है. जब किसी को देखो, so bless them, that God divine, whichever form you believe in it, bless this mother and child with lots of love and long life. Instead of feeling please मुझे भी दे दो, let me also experience it, bless them. Somewhere or the other, no, this there is a lot of pain and sorrow because you're not being able to become a mother. And this, every time you look at people, other mothers, you feel very envious of them, that I wish I could experience it. These are the two things that are stopping you right now. So what you will do is work on these two aspects. Instead of looking at them and being envious of them, when you look at other mothers, bless them. Without the expectation that I want to experience it, so I am blessing them. No, I cannot experience it, so I want others to be happy. Whoever has this gift, I want them to be happy. Start from there. Secondly, please start chanting Surya Dev. Surya Dev. Surya Dev and Haram. Ram is basically for your karmas, and Surya Dev is for child, for getting a child. So you can chant Surya Dev 108 times every day, and you can chant the switch word Haram 108 times. Haroum. Is Haroum. How many times? 108. 108 times. 108. Is there any timing, specific timing? No timing, nothing. You can chant during your menstrual cycle also. It is perfectly fine. You can just start chanting. You should start seeing a change. And what I would recommend is you can also do the part of Harivansh Puran. It is said that wherever you do a part of Harivansh Puran, it will get you a child. In fact, many of my friends and family members have done the part with the intention of creating bliss in their life through children. I have to read that book Harivansh Puran by my own self. It's a very thick book. What you can do is just read one passage or 2 lines or 4 lines every day. It is better if you read it yourself. Otherwise, if you can't, then you can you can give the sankalp to any pandit or anybody else to do it for you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, guys. Ma'am, can I ask? Please raise your hand. Those who raise their Ma'am, hand, can I'm I asking them. Okay, last 2 questions now. Already 10:10 हो रहा है and I have been talking since 10:30. अब मैं बोलते बोलते थक गई हूँ. So Rajdeep Singh and श्वेता, मेरा Samina. क्वेश्चन बाद में प्लीज आप सब समझो. I am also getting tired. बाद में लूंगी सबके Ma'am, since starting I wanted to ask, ma'am, please. Please understand, everybody here is waiting for a chance. But this is an orientation session and I'm answering as many as possible. If it is not possible, there'll be other orientations. Please join and wait for your turn. These are destined things. If you all will jump into this, very last 2 questions will you. Please understand, I am also a person and I'm getting tired of talking. Ma'am, I have a big problem, but So can I please have questions from the 2 people I just named? I'm sorry, मैं भूल गई. मेरे को आपको म्यूट करना पड़ा है because इतना पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी. किनका मैंने बोला था, प्लीज आप एक बार ही मुझे दोबारा बताओगे? नो, राधा जी का नाम मैंने नहीं लिया था. समीना पांड्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Samina Pandya, yes. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. I'm from Chennai. Ma'am, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा केक और चॉकलेट का business, it's not running. Just I'm getting hardly 1 or 2 orders a month. So when I'll get successful in this field? What is your definition of success? What would you define it in terms of an income? A monthly of 25 to 30,000 a month, ma'am.
So approximately abhi it will take about 16 to 18 months for you to reach 25,000 to 30,000 ka benchmark. And somewhere or the other, please don't get stuck into the belief system of that मेरी मजबूरी है. It is not your majburi. Okay, The ma'am. belief that I have to do it, I am stuck. If I don't do this, my life will not go ahead. ये जो मजबूरी है ना, ये आपको रोक रही है. इस पे Okay, work ma'am. करो. Okay, 18 ma'am. months के अंदर, if you can work out on this aspect of your life, 18 months में you'll see a very good flow in business. It will start gently, moving ahead. So what I have to do, ma'am? Simply stop thinking negative Okay, and ma'am. start thinking positive. And please keep on moving ahead in your life one at a time, one day at a time, with this belief that you are doing what you're meant to do and the right opportunities are there with you. ये अगर बेचारापन लेके जियोगे ना, भगवान, why am I going through this? ये सब मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है? जो कि नॉर्मल है, आता है, सबकी लाइफ में आता है. Okay, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. You're welcome. Rachna Jain was the second person मैंने जिनका नाम लिया था. रचना जी, एक मिनट, I will simply unmute you. Yes, please unmute yourself. हाँ जी, आप अनम्यूट करिए. मिस्टर जैन, अनम्यूट. जी. हमारा एक है ना पुश्तैनी घर है, हाँ उसकी जी. काम पर मीटिंग हुई, हमारी फैमिली मीटिंग हुई, तो 99.9% हमारा काम हो जाता है. पार्टी भी रहती है लेने वाली, लेकिन 1% कोई ना कोई भाई बहन ऐसे आते हैं कि बोल रहे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. अब कल हमारी फाइनल मीटिंग है मैडम, तो कल हो जाएगा हमारा काम. कल की मीटिंग में कंसेंसस तो आप रीच कर लेंगे. यू विल ऑल रीच वन सिंगल कंसेंसस कि ये करना है या नहीं करना है. हाँ जी. ठीक है, लेकिन कल की मीटिंग से वो डिसीजन आपकी चॉइस का होगा कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है. बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल इन योर फैमिली हु आर स्टिल रेजिस्टिंग गोइंग अहेड फॉर दैट हाउस. सबने एफिडेविट लिख के दे दिया, मेरा ये लास्ट बस, क्योंकि वो लोग कोई कर रहे थे परेशान. 7 जने हैं टोटल, 6 जनों लिख के दे रही है मेरा ये, मैं कल फाइनल मुझे जाना है. मैंने कहा तुम सब डिसाइड कर लो, उसका मैं लास्ट में लिख के दूंगा. तो सब राजी होगा, कल मुझे जाना है. बस ये है मकसद पूछने का. कल काम हो जाएगा, हो जाएगा. अगर आप सिर्फ आपकी रजामंदी, तो आपकी तो हो जाएगी, कल हो जाएगा काम फिर. लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, देयर विल बी समबडी हु माइट वांट टू बैक आउट. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दे विल नॉट, बट वो आएंगे माइंडसेट से, कैसा होगा, क्यों होगा, ऐसा होगा. ये हमारा है ना कोर्ट में काम हो रहा है, मीडिएशन में, कोर्ट में हो रहा है, तो कोर्ट में तो बैक कोई मान. मीडिएशन के टाइम पे कल कोई नए टर्म्स आ सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दैट इज इट. ठीक है. दिस विल नॉट स्टॉप नहीं होगा काम आपका कल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. थैंक यू. किसी ना किसी. थैंक यू. थैंक यू. Guys, thank you all for being a participant for this orientation. I would have loved to answer all your questions, but मेरे लिए इतने questions answer करना possible और नहीं है. मैं 10:30 से नॉन स्टॉप बोल रही हूँ. नहीं, everybody has a question. संगीता, ऐसे ऐसे करके वहां से बोलने से फायदा नहीं है. Please understand and honor my space. I have given unconditionally to each one of you for the last 3 hours. Now understand, I have my own limitations as well. And you all can join in again for the next orientation, or you can book your personal sessions with me or my students. That's your choice. And I shall see you all next in whichever next session I do. If those who want to register for at a discounted price, please register by 5 p.m. today. Thank you all for being a participant of our Mokshapatta orientation today, and have a great weekend ahead. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Thank you all. Thank you so much, everybody. Thank you for being here.